क्यों कर संभालते हमें वो कमर्शियल बैंक्स जो खुद टी बिल्स के नशे में ब्रांचेस खोलते रहे। मंजिल की राह में डिजिटल बैंक्स उठ खड़े हुए और कमर्शियल बैंक्स गुबारे सफर देखते रहे। Why did you decide to go and become like an entrepreneur? I was in the top 10 number in terms of seniority in any case. But जंगल में मोर नाचा किसने देखा? LinkedIn पे मुझे कोई अप्रोच करे मैं उसको मना नहीं करता। How do you feel you've grown as an entrepreneur? मैंने जब भी मार खाई है वो मैंने एरोगेंस की वजह से खाई। कभी जेब में हाथ डालोगे 500 रुपए मिल जाएंगे, 5 मिनट नहीं मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सब लोगों के लिए नहीं है, ये बड़ी कठिन चीज है। You will get so many failures before you get success. Become a serial entrepreneur. I have 8 stents in my heart. I'm living on duas of people who have assisted. I believe that. Nadeem, thank you so much for being here. मैं आपके साथ काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था वो करने की, but I'm really glad you were able to make the time. Idea about today's episode is to help inspire and get actionable insights जो पाकिस्तान में कोई भी एक young founder say or someone who is not a founder yet but aspires to be a founder just to be able to give them a lay of the land. So सबसे पहले before getting into fintech और इन चीज़ों के बारे में बातें करने से पहले if you can share कि आपकी journey कैसे थी and why, I know you were at Citibank, but why did you decide to go and become like an entrepreneur? So I had spent 27 years at Citigroup worldwide, in 7 different countries. And I was country head Iraq working on sovereign debt restructuring. So it was a cushy life, living out of Dubai, coming home every weekend, getting a tax-free salary. But I came to a point in my life and I said, do I want to be one of the many city bankers who have done well, Pakistani who have done well? I was in the top 10 number in terms of seniority in any case. But jungle mein more nacha kisne dekha, okay? So I wanted to have, like most people do, a legacy, something which I could put my imprinter on. So, and also I felt that, Pakistan had done a lot for me and I hadn't done anything for Pakistan. So I was looking then to find an opportunity jahan my 27 years of experience would keep me in good stead. I would be able to do social good and also create a company which had value. So, those were the objectives. So, when mentally, Einstein says there's nothing more powerful than an idea whose time has come. So, the idea was to come back to Pakistan, do something, and it was very ambitious and maybe arrogant at the time, that would change the financial landscape, create value and change people's lives. God willing, thank God, I was managed to do all three. It was a very long shot, okay? So that's the whole journey. That's what this book in front of you is about. Yeah. But that was the idea, to come back to Pakistan, give back, but not on charitable basis, but on a double bottom line. Create financial impact on the bottom of the pyramid, but also create value at the same time. But so have you achieved, do you feel you've achieved what you set out to do at that point? So my goals keep changing. When I was very young, my goal was to make $1 million, own a Merc and work for a multinational. Okay, which you did. Yeah, so that was eons ago. So that goal, yes, with the grace of God, that goal was achieved. We created EasyPaisa. EasyPaisa was the only financial revolution in Pakistan. A financial revolution is defined of millions of people changing behavior. Otherwise, you'll see every TikTok post or LinkedIn post revolution. I mean, revolution is hundreds of millions of people. Yeah. EasyPaisa changed the behavior of hundreds of millions of people. Changed life for them as to how to make transfers, how to pay a utility bill, how to open a basic account. That's what EasyPaisa achieved. How they interact with money, basically. How they interact with money. The branch network of the bricks and mortar and the ATMs, about 17,000 ATM, maybe, 25,000 branches. The agent network that we started, which provided basic banking, cash in, cash out, money transfer, utility bill, is more than 100,000. So it changed the nature of how people acted. It brought financial literacy to people because opening a wallet became *786# and your CNIC number. Yeah. And transferring money and receiving money became second nature to the bottom of the pyramid.
And that's what EasyPaisa in the end suffered from. The upper middle class or the middle upper class felt this was something for their staff, not for themselves. And that's how it remained. But that's where the volume was. Yeah, so that objective was achieved, but my objective since then obviously moved on. So I'm working on those now. What are your objectives now? My objective now is to create numerous companies which have hundreds of millions of transactions. Okay. Rather than just one company which was able to do that. Okay. And Planet N is like so obviously. Planet N is the catalyst, or the anchor, which is creating these companies, which hopefully. So success for me is defined volume for me is defined as having 1 million active customers monthly active. Minimum. Monthly active. Minimum million. सही है ठीक है. हमारे पास 10 million भी हैं, 50 million भी हैं, 10. I mean, they're all within the ambit. But million, if you achieve, then you're on the right path. ठीक है. Monthly million. I may use monthly. Then obviously you want higher volume of what you can do, and I build companies to sell them. I don't build companies for generational, keeping, because none of my daughters are interested in what I do. So there's no point. So I build companies for exit. But that's very different from generally how most people say, most Pakistanis think, especially people who have had businesses and they've had them for generations, right? Yeah. It's a different philosophy. Yeah. They have offsprings, they're going to pass it on to 4 generations, 3 generations. My offsprings are not interested in what I do. So, I build companies that I can exit from, and again, with the grace of God, we have the best track record in Planet N, including Tameer Bank as the best exits in Pakistan. Yeah, of course it is. So in your journey as an entrepreneur, what were the lowest points that you came across, and what do you think helped you get through? Because there's no journey like that's linear. Or देखो जो multinational से आते हैं ना, especially जो मतलब के जिन्होंने got some level of position that country they've had, they come with the inherent arrogance that we know everything. Okay. Yeah. And we know best. And that was my fault as well when I started Tameer Bank. So the lowest was when, in the second year of operations, Tameer Bank was losing money because of its operational startup nature. दूसरा हमारी bad debt from 0 to 25% to 30% चली गई थी. ठीक है. And I had 6 months of salaries and then 3 months of salaries left to pay to the staff. That was my most toughest point. I had my last $1 million, which I put in as well. My investors who were there also pitched in. They still had faith in me. That was the lowest. And that was initially, honestly, that was because of the arrogance. The 4 people that I had, the 3 other people who were my co-founders, which I got from Siddiqui. And my mindset, mukhtalif. Who were the other co-founders? So I founded the bank. The conception was on, but I got 3 other players. Okay. Brigadier Tariq Mohar, Ali Abbas Sikandar, Shahid Mustafa. Okay, fine. With these guys, I got them. I gave them free equity. I gave them market-based salaries that they were getting in Dubai, and we started the bank. Okay, fine, excellent. And you feel since then you've been involved in so many other ventures. Do you feel that the challenges you're now facing are new, different, or like how do you feel you've grown as an entrepreneur through all of these? So Tameer Bank, we didn't lose money in the sense we got into trouble. But we pivoted, and one of the things an entrepreneur needs to learn is how to pivot. That what your original plans जो आपने बनाए हैं वो अगर वो नहीं चल रहे, आप pivot किस तरह करेंगे? You can't be wedded to your original plans. My biggest loss was a business that I got into that I should never have gone into, but I had got the God complex by that time because I had sold Tameer Bank, and it was the most successful exit in Pakistan. Yeah. And therefore, again, the arrogance factor came in. मैंने जब भी मार खाई है वो मैंने arrogance की वजह से खाई है, and that's been my humbling experience. God has humbled me and very get my feedback. जहाँ I've not been arrogant, I've been brilliantly successful. There I lost $5 million. Oh wow! Okay. What venture was this? It was a supermarket. Okay, fine. Which I should never have got into this in the first place. Yeah, but I thought I would be able to turn it around because I thought I could do everything. Yeah, and why do you think the supermarket is generally a bad idea in Pakistan? Or do you think I don't think supermarkets are a bad idea in Pakistan. I think you need to understand the supermarket business. You need to have the right location. You need to understand that you're playing in the grey area and I can't play in the grey area given my background and my past's background, and that's what I should have thought of that on day one. Okay, fine. And if you can't play in that grey area and you can't play in the cash versus undisclosed receipt area,
then you should never get into a cash business like that, which I did, and I should have known better. Nice, fair enough. Which brings us to fintech, which is your forte. So if I were to think about fintech, एक बिल्कुल first principles की basis पे, like in the history of mankind, we haven't figured a way out to send money from one place to another without losing some in the middle. And that losing some in the middle is the great fintech opportunity generally, right? How do you define Pakistan में अगर fintech को अगर मैं and I know Planet N puts out a lot of those maps. How would you define कि fintech में क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं? अच्छा, but देखो पहले I'll come back to your definition of fintech. हाँ. So it's not just losing something in the area; it's the customer journey as well. Of course, yeah. Okay, the key is the customer journey. The customer is willing to pay for losing that amount if the journey is not convoluted. ठीक है. EasyPaisa charge 4 times what the post office charges. But people came because of the convenience and the transparency and the fact there was a state bank behind the branchless banking agents. So when you provide security, you provide transparency, and you provide convenience, then it's not just a money issue. EasyPaisa is very, and Jazz, all these, 1.5%, is a high number. Yeah. So all the bottom of the pyramid money transmission services are very expensive in the absolute amount. It's the convenience you provide them versus what's available in the market. So what was the difference of experience in EasyPaisa and the post office back when you started? देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर मैं आपको कहानी बताता हूँ. मेरा दोस्त लेट सलमान तासीर, I was in his house once when he was governor of Punjab. He said, यार आजकल मेरे पास पोस्ट ऑफिस की बड़ी दरखास्त आ रही है, पोस्टमैन की. अच्छा. मैंने कहा पोस्टमैन सबसे मुश्किल काम है यार, बाइसिकल पे जाओ, गो क्या पोस्ट करो. कहते नहीं BISP. So there was cutback, money being skinked off by the postman for all the BISP beneficiaries, and therefore the postman position became very lucrative. Okay. So when you digitize this and you opened wallets, then the money was going directly into the wallet. Now there were still some intermediaries left because these women didn't know how to operate a PIN, and there were intermediaries sitting कि आप हमें PIN दे दें, हम आपके पैसे ATM से निकाल के ले आएंगे, एजेंट से निकाल के ले आएंगे. So still not 100% efficient, but a lot more efficient compared to how the post office was doing it. Plus there was a number of days it was taking them to receive their check or the money order. यहाँ तो इंस्टेंट है ना, आपको पता है दिस डेट जाएगा, अपने आपके डेजिग्नेटेड ब्रांच में ATM से या ब्रांचेस बैंकिंग एजेंट से पैसे निकाल लें. So that was the big difference. ठीक. So coming back to the landscape of fintech, like क्या चीजें fintech के अंदर आ जाती हैं? देखो fintech, I mean, there's no hard and fast rule. Yeah. So in my view, the 5 biggest products of fintechs are, and the one in Pakistan most leading by the volume is payments. ठीक है. So anytime you're doing payments and you don't have a banking license, you have EMI license, the PSO PSP license, or non-license. So I mean those payments followed by loans, and here the loan business is very high because of nano lending. हाँ. Followed now by savings, where you have committees that are coming up. You have fractional products, fractional real estate, fractional gold coming up. Those are saving piece. Then investments, where you have, the likes of people who are now consolidating single KYC and allowing you to go into a smaller magnitude of money market funds or equity. Yeah. And then lastly, information with people who are providing you information about how to invest, wealth management. So those are the 5 big aspects of fintech. With आपने InsureTech डाल दो, फिर सब चीज tech आ जाती है बीच में. But these are by old school the 5 products which are offered by fintech. ठीक है. But in this, like personally, the brands, like the things that you've built yourself have been in the payment space, right? No, in the payment space, in the lending space. हाँ, lending में भी आपने तेज बनाया था. बिल्कुल. गोल्डफिन है, वो गोल्ड बेस्ड लेंडिंग कर रहा है. तेज बनाया था, वो लेंडिंग कर रहा है. अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो पेमेंट्स के अंदर भी हम रहे हैं. Saving में we into fractional real estate, looking at fractional gold as well. I believe, X-state. So the only piece that's left is now the information piece. We are not in that, but we had done other work. We had done comparison engines, Kallo Compare. We had done, at one time. So we've done many things in these 5 segments. So I wanted to ask you about this gold thing. Like gold में क्या मसला है पाकिस्तान में? Because why haven't we been able to really truly be fractional? Like gold की ownership fractionalize क्यों नहीं हो पाई? अब जो भी खरीदते हैं आपके पास legalized gold available नहीं है पाकिस्तान. पाकिस्तान में गोल्ड जो इंपोर्ट होता है वो लीगल गोल्ड नहीं है. तो सारा उस पे आता है. जब रसीद वाला गोल्ड मांगते हैं तो आपको मिलता ही नहीं है. तो 2 कंपनी ने शुरू किया था, जब वॉल्यूम बढ़ा दिया टू शट डाउन because they can't got official gold. आपको रसीद वाला गोल्ड कोई देगा नहीं. और उसकी क्या वजह है? क्योंकि इंपोर्ट नहीं होता गोल्ड, खेपियों में आता है. नहीं तो why hasn't the government allowed the import of gold? The government keeps a
doesn't want to spend foreign exchange officially for importing gold, but we are a gold country. Now, on the other hand, gold-based lending is huge. Yeah, it Because is. you're not looking for receipt gold, you're just looking for ornaments. You're not looking for proof of ownership. जब अगर मेरे पास कोई सोना लेके आता है कोलैटरल, मैं उससे नहीं कहता मुझे रिसीट दिखाओ कहाँ से आई है. मैं उससे बोलता हूँ तुम्हारी मिल्कियत का, वो कहता है हाँ, उसके खिलाफ मैं उसको कर्जा दे देता हूँ. लेकिन जब मैं फ्रैक्शनल गोल्ड करूंगा, आई हैव टू बाय गोल्ड बिस्किट्स. And you have to keep it, yeah. नाउ द अदर ऑप्शन इज कि जैसे जब मेरे पास कोई सोना लेके आए, दैट्स एन आइडिया, नाउ समबडी रेप्लिकेटेड ग्रेट, ओके, मैं उसको कहता हूँ यार तुम मुझे अपना सोना रेंट करने दो. अच्छा, Okay. सही है. मैंने किराए पे मैं सोना रख तुम्हारा लिया. सोना लेके पिघला दूंगा ठीक है. और उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी मिल्कियत में रहेगा, और 1 साल के बाद मैं तुम्हें एक और सेट दे दूंगा प्लस 20%. प्लस 30%. 20%. 20%. मतलब कि ताकि तुम्हारी जो यू डोंट हैव द हाँ. ओरिजिनल थिंग लेफ्ट, लेकिन उस सोने को मैं फ्रैक्शनलाइज करके निकालता रहता हूँ. सो दैट्स एन आइडिया. बट ऑफिशियली अगर मैं मार्केट में सराफ से खरीदने जाऊँ तो मुझे नहीं मिल रहा गोल्ड, और अगर मैं खरीदता हूँ गोल्ड तो जो वो मुझे टैक्सेस एंड एवरीथिंग एल्स मिलते हैं, तो देन द प्राइस ऑफ गोल्ड बिकम सो exorbitant कि नहीं होगा. But I can try that as well. We haven't. And you think the customer in Pakistan is willing, like we spoke about convenience, right? कि हो जाएगा. So मैंने अब ये what I'm working on right now is saying, okay, you know, find official gold, pay the tax, pay the sales tax and everything else, because you see उसके बाद इसको देखो fractional करके लोग compare, because you have instant price comparison ना. हाँ. देख लो उसके बाद convenience की वजह से अगर मैं 100 रुपए का सोना बेच रहा हूँ, हाँ, तो एग्जैक्टली. लोग दोने के लिए तैयार है कि नहीं. क्योंकि अगर मुझे सेव करना है, मैं 100 रुपये अभी खरीद सकता हूँ. दैट्स अ 100 वेरी रुपए का डिफरेंट तो बर्गर नहीं आता यार. बिल्कुल नहीं आता. 300 का भी नहीं आता अब तो सही से. उसके एंड यू ऑल्सो मेंशन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में आई नो प्लैनेट एन की एक कंपनी है वादा विच डज माइक्रो इंश्योरेंस. बट व्हाट इज द अदर अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस यू थिंक? Having a digital insurance company itself, तो मतलब like a full, like an insurance company which is entirely digitally interfaced. it can be a takaful, it can be a conventional insurance, and having a different model using AI for claim management and finding a partner which has significant customer base to be able to cross sell insurance. Now हमारे पास जो ब्रेड एंड बटर है बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज का, वो है लाइफ में हेल्थ, जहाँ सब पैसे लूज करते हैं. ठीक है. कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं पैसे नहीं, हेल्थ में पैसे नहीं बनते. इनके पैसे बनते हैं द ओल्ड कन्वेंशनल यूनिवर्सल लाइफ विद सेविंग्स एसोसिएटेड विद जो एजेंट्स के थ्रू करते हैं. Okay. Okay, that's not the product I am going to do. That's a rip off anyway. You Bank should insurance always होती है. disaggregate life and savings. Life insurance is not life insurance. Life insurance is death insurance. Yeah. You want the maximum cover so that if you die, there's adequate money available to your family. बिल्कुल. You want to save in mutual funds. Don't combine the two. It's the biggest rip off. But that's how they do it. So where we haven't made inroads and our neighboring countries have, अब जाके हम कर रहे हैं फोन इंश्योरेंस. फोन इंश्योरेंस इज वेरी बिग. स्क्रीन इंश्योरेंस इज वेरी बिग. प्लेस टू प्लेस, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल इंश्योरेंस इज वेरी बिग. Okay. Yeah. होम कंटेंट इंश्योरेंस इज बिग. ये सब चीज़ हमने What is a home like घर में जो भी सामान है सब कुछ है. आप करने बड़ा लाइफ ऑफ मरीन तो नहीं करते, बट कंटेंट इंश्योरेंस का जब आप फोन कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी कर लें. एक सर्च आती है, सब कुछ उड़ जाता है. Yeah. ओके. तो these are stuff which are retail level scale नहीं हुए. That's the opportunity in the non-life side. On the life side, the opportunity obviously is just pure term life. On a, and if you can figure out to the extent possible pay on you go basis, based again on actual thing rather than taking the premium up front, we may get more scale. Okay, that's interesting. And the lending space जो है, and I know I've told you about कि I've done 2 episodes with some in consumer and both SME lending, but पाकिस्तान में lending का मसला क्या है? Like in the sense क्यों लोग उधार देने में एक तो इतना मसला है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, और वैसे बैंक्स क्यों नहीं है स्पेस को वो फुलफिल करते? बैंक के लिए मैंने एक शेयर लिखा है जिसकी वजह से मैं उनके साथ बहुत पॉपुलर हो गया हूँ कमर्शियल बैंक. अच्छा, ओके. वो शेयर अर्ज किया है कि क्यों कर संभालते हमें वो कमर्शियल बैंक्स जो खुद टी बिल्स के नशे में ब्रांचेस खोलते रहे. गेट योर शो पॉपुलर इज वेल. मंजिल की राह में डिजिटल बैंक्स उठ खड़े हुए और कमर्शियल बैंक्स गुबारे सफर देखते रहे. द कमर्शियल बैंक मॉडल इन पाकिस्तान इज लाइक अ फंड मैनेजर मॉडल. ओपन ब्रांचेस, generate deposits, T-bills, PIBs, commodity lending. 70% of the earnings come from this.
now 70%. Why lend to a customer? सही बात है. Total individual customer by the entire commercial banking industry, credit cards, mortgages, personal loans, autos is 2.1 million active loan customers. 2.1 million total. That's nothing. Nothing. In a country of 230, 240. Like 1%. Microfinance industry के पास अब 11 मिलियन है. Wow. Okay. जिसमें 6 मिलियन नैनो लेंडिंग है. नैनो लैंडिंग क्या उसकी लिमिट होती है? नैनो लेंडिंग की लिमिट है 50,000 महीने की. ओके. मैक्सिमम आप दे सकते हैं, लेकिन टिपिकल लोन जो होता है वो 5 से 10,000 का होता है. टिपिकल टेनर 2 हफ्ते का होता है, लेकिन 1 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. ओके, बट रेट पे रिस्ट्रिक्शन है बाय द एसीसीपी. ओके. स्टेट बैंक ने अभी रेट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया. इंस्टेंट लोन बेस्ड ऑन स्मार्टफोन डेटा. इंस्टेंट आपको चाहिए. What you started to do with Thesis, right? I remember. I was before my time ना. Yeah. तो बहुत पॉपुलर हो गया है. Yeah. देखो, तो commercial banks don't expect them to lend. They have a very good business model that provides dividends to the shareholders, that provides huge bonuses to management, and that provides very low risk for the board. और जहाँ उनके पास पैसे नहीं है, State Bank creates money for them to participate in the T-bill auction. Government of Pakistan is always going to have deficit financing. They'll always need money. So this model, once you need a commercial bank license, is the money printing money option. Minimize, do the minimum regulatory required to lend to the industry. SME lending used to be 17% of the total lending stock. Now it's about 6%. 17%. When was it 17%? Less than 5 years ago. Oh wow! So it's because the government has borrowed too much in the. Not just the government borrowing, the banks are just not interested. And other than the agriculture limits, there are no limits on anything else. अब स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कर रहा है SME lending का, सप्लाई चेन lending का, बट अभी तक उन्होंने लिमिट्स नहीं लगाई हैं. और इन मेनी केसेस दे पे द पेनल्टी, जो अगर आप नहीं करें rather than do the lending. It's lazy lending ना. मतलब जब लॉटरी निकली हुई है तो क्यों चेंज करें? That is the thing. But how do you see the system changing then? Or do you not see the system changing at all? Not from the commercial bank side. हाँ नहीं, वो तो their incentives. There are 5 digital banks which are all thinking of lending in different stages of their evolution. There are these nano lenders. There are these BNPL lenders now coming up. Nano और BNPL lenders का मसला है कि उनके पास deposits नहीं है, तो liquidity constraint आती है. बिल्कुल. Unless a bank starts doing nano lending. Okay. So that would be a nice solution. Okay. Right. You were putting poor friends in trouble. So they will change the number of customers. Now, not by quantum of loans, but the loan volume, but by volume, not by value. क्योंकि loans are जुड़े. But financial inclusion आएगा digital bank से through the nano lenders, SECP, NBFIs coming in. ठीक है. That's how the lending landscape will change. Not through commercial banks. And so coming to digital banks, how do you see that journey going so far? Like with Rakami? It's early days. They're all starting from scratch. System बनाए शुरू से. ठीक है. फिर लोग हायर करें, policies बनाए. तो स्टेट बैंक की अपनी जर्नी जो है ना, इंस्पेक्शन की, between pre-pilot, pilot, post-pilot, साल तो उसमें लग जाएगा. तो अभी वो उसी में सीख रहे हैं अभी सारा. अभी तो किसी का ऑपरेशनल रेडीनेस का इंस्पेक्शन नहीं हुआ, अदर देन EasyPaisa, which is our existing entity. So going forward, what do you think will be the biggest challenge ये जो सारे face करेंगे digital banks? 2 challenges face करेंगे. सबसे नंबर 1 3 challenges. पहला चैलेंज फेस करेंगे लिक्विडिटी का. डिपॉजिट किस तरह उठाएंगे? डिपॉजिट कैसे आएगा? सो अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है कि डिपॉजिट किस तरह लेंगे. भाई अगर आप सोचो कि वॉलेट्स में पैसा आता है ना, हाँ. कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है. जैसे EMI के कुछ वॉलेट्स हैं. बिल्कुल. कुछ वॉलेट्स हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस एजेंट्स के थ्रू है. ओके, सो वॉलेट से पैसा लेंगे, बट ये बिकॉज दे कैन टेक इंस्टीट्यूशनल मनी एज वेल. एक कैप है 30% का for cash management, but institutional money they can't take, which are rule that state banks will have to change eventually. तो ये इनको पहले इंस्टीट्यूशनल पैसा लेना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इनकी नीश क्या है, किस पे पैसा लेंगे, फिर डिपॉजिट से लेना पड़ेगा, लैंडिंग करनी पड़ेगी पैसे लेने के लिए. बॉरोइंग पैसे जब आते हैं जब आप लैंडिंग करते हैं. एक इनका चैलेंज आएगा लिक्विडिटी का, दूसरा इनका चैलेंज है कैश इन कैश आउट का. वॉलेट मैंने पॉपुलेट कर लिया, पैसे कहाँ से निकलेंगे, और जो पैसे निकल रहे हैं उसकी प्राइस क्या है. ओके, ठीक है. ओके, तो ये इनका सेकंड चैलेंज आएगा.
तीसरा चैलेंज आएगा डिपेंडिंग हाउ रोबस्ट द इन्फोसेक इज, how much spoofing, how much fraud, how much phishing is done, कि इसको वो किस तरह मीट. These are three challenges of the digital banks. You said something कि पैसे जब आते हैं जब आप lend करते हैं. I didn't understand that really. देखिए अगर आप मार्केट में जाते हैं कहते हैं मुझे डिपॉजिट दो कहते हैं ओ इसकी तो ब्रांच ही नहीं है, हमें क्या पता ये बैंक है कि नहीं है, ना सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं. जब आप पैसा देना शुरू करते हैं कहते हो ये तो पैसे दे रहे हैं, दिस पीपल आर रियल, दे लेंडिंग मनी, देन यू ग्रो कॉन्फिडेंस. तामीर में तो हमारी ब्रांच थी, औरंगी में हमने पहली ब्रांच खोली थी, एक नेशनल बैंक की ब्रांच थी और कोई ब्रांच नहीं थी. 1 साल तक किसी ने हमारे पास अकाउंट नहीं खोला. 1 साल तक हमने पैसे दिए मार्केट में, देन इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांचेस इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एज वेल. पीपल वांट टू गेट कंफर्ट एंड ट्रस्ट रादर देन फॉर समबडी अप इन द एयर, जैसे कोई हेड ऑफिस को किसी को पता ही नहीं किधर है, ना कोई ब्रांच है तो फेस ही नहीं है, सिर्फ एड्स आते हैं, फोन कॉल सेंटर है और ऐप है, तो पैसे देने में इतनी आसानी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा. ठीक. एंड दैट्स अ चैलेंज जो सारे डिजिटल बैंक्स को फेस होगा. तो वो इजी पैसा इज इन अ डिफरेंट पोजीशन बिकॉज वो तो they have the एस्टैब्लिश है. brand, बाकी चार जो है सिमिलर चैलेंज, हाउ द एक्ट इज गोइंग टू बी, मैनेजमेंट किस तरह सोचती है इसके बारे में. सो अगर अभी आप पाकिस्तान में कोई एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, and even if you are, because whenever I speak to you there's always a new plan about something new. तो अभी आप किन opportunities को explore करेंगे? देखो अगर तुम फिनटेक के दायरे में रहते हो, and I'm not confined by fintech, my thesis is very clear. Are you changing the customer journey? Can you monetize it? Can you scale it? And I'm interested. ठीक है. Could be logistics, could be entertainment, could be fintech, InsureTech, could be anything. As long if you change the customer journey तो टेक आ गया. मोनेटाइज है इसका मतलब है कस्टमर इस सहूलत के लिए पैसे देने को तैयार है. बिल्कुल. स्केल इसलिए कि अगर आप लाख कस्टमर लेके मेरे पास जाएंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है. ओके, तो स्केल इसलिए चाहिए. सो any idea that I look at, I'm looking at several ideas right now, must have these three components. Within the fintech world, what is exciting me right now is the nano lending piece. Okay. I think you could do 10,000 loans a day. या पर अभी तो इतने सारे मार्केट में वो चाइनीज प्लेयर्स भी आ रहे हैं. हाँ, बिल्कुल आए हैं. 6 चाइनीज लेंडर्स हैं इस वक्त. एग्जैक्टली. और 2 पाकिस्तानी हैं, तो कोई मसला नहीं है. टोटल जब लेंडिंग अभी देखें, अभी तो 2 जाइंट्स हैं, इजी पैसा एंड जैज, बाकी तो सब ओपन है ना. टोटल कस्टमर बेस अगर पाकिस्तान में इनका मिला के 5 मिलियन है तो कितनी अपॉर्चुनिटी और है. So if I look at opportunities, first I look at segments, then I look at this thing. Segment में मेरे लिए सबसे बड़ी, मतलब नॉट बड़ी, equal opportunities is, if I look at individuals, is in students and women. ठीक है. No one's really got dominance over there. No one's really created services कि जो कैसे ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का सोल्यूशन है या ये खवातीन का सोल्यूशन है. ओके, ठीक ठीक. Third is S of the SME, which is part of the supply chain. Those, in my view, are very interesting opportunities. Okay, from a segment. ठीक है. Students, women, S of the SME, maybe agriculture under 5 acres. These are all very interesting segments. In सब के अंदर the prime product मेरे व्यू के अंदर is going to be the lending product. ठीक है. Lending is your anchor, या महवर कहते हैं center of gravity को. Okay, that's the center of gravity. When you have a lending customer, you have much more cross-sell, upsell opportunity. And you have a lot more confidence in the customer. तो पैसे बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च करना पड़ते हैं. ठीक है. Okay, now you can start with a saving product, you can start with a committee product. उड़ान ने किया है, मोनिस ने किया है, दुकान ने किया है committee product. एक स्टेट जो है फ्रैक्शनल कर रहा है. स्केल करना मुश्किल होगा. और क्यों मुश्किल होगा इनके लिए? क्योंकि कुछ दे नहीं रहे. This is what we spoke about earlier. स्केल करना मुश्किल है क्योंकि इन सब के लिए मेरा ख्याल है, देखो ज़्यादातर फिनटेक्स अदर देन 1-2 जो निकल गए वो आउटलायर्स हैं. दे नीड पार्टनर्स टू एंकर विद. जहाँ दोज पार्टनर्स है 5, 10, 15, 20 मिलियन कस्टमर्स एंड they anchor with them, so you have that reduced cost of customer acquisition. And then saving product can't be the only product to make your company profitable. Okay. Yes. Why do you say that? Because usme log neither savings, no payments, no investments have enough juice in them to make it standalone profitability. Okay. You've got to have some more stuff to get that. Customer acquisition high hai. Okay, so lending is really the essence of fintech. Like lending कर लें आप तो then you can get into all of the other products.
Okay, But fine. lending के लिए you need a lending license or a partner, and you need liquidity to Yeah. be able to lend, and you need some money to be able to write off stuff before your algorithm gets perfected. Exactly. You mentioned that there were a couple of outlier fintechs. Right. Who would you say they are in Pakistan abhi? I think देखो fintechs के अंदर मैं देखूं अगर मैं define करूं तो let's look at the payment side. ठीक है. Payment side में most profitable fintech by a margin of I would say 10 is SimPaisa. Yeah. Okay, but SimPaisa को side पे. But payments और उसको side remittances में उसको side पे. चलो मैं उसको side पे. Then you have Naya Pay and Taza Pay. सादा Naya पे, Pay yeah. and Sada Pay. Sada Pay. Yeah. They only became, one of them became profitable cross-border मिल गई. Okay? So cross-border is very important. By that, I think all EMI license you will never make money. ये one link छोड़ दो. I mean that's just happened to have a license. Normal EMI license पैसे बनाना बहुत मुश्किल है. क्यों उसमें क्यों मुश्किल है? Because again it's just payments और उसमें सिर्फ आप unless आप देखिए, transaction fee ना लें. आप डिपॉजिट का बेनिफिट नहीं ले सकते. एस्क्रो में जाता है बैंक, आपको जो मर्जी आए देता है. ठीक है. आपका सेटलमेंट बैंक आप पे डेली लिमिट ट्रांजैक्शन पे भी इम्पोज करता है. यू कांट गेट टू मच वॉल्यूम बिकॉज द बैंक चोक्स यू ओवर बिकॉज यू डोंट हैव योर ओन बैंक. ओके, द पेमेंट्स दैट यू मेक कैश इन कैश आउट पे आप पैसे दे रहे होते हैं लोगों को. बट दिस वन सादा पे चेंज द कस्टमर जर्नी. Yeah, it's very good. Very good. Something to learn from. Yeah. Segmented it, young generation, change the customer journey, got the volume. They need to figure out a way how to partner with how to lend. And then they can be, doing great. अगर तुम बड़े देख लो, Revolut को देख लो, सब eventually they all got into lending. हाँ. Doesn't make any, money. So they have to figure that out. And obviously Napier did well as well. Danish and his team did Yeah. well. These are there are only two successful EMIs. बाकी तो EMI कौन सा सक्सेसफुल EMI है? बिल्कुल नहीं. हाँ, सही बात बल्कि है. 12 में जितना 6 ने तो लाइसेंस वापस कर दिए. डोरमेंट पड़े हुए. मैं तो कहता हूँ EMI लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है. अभी somebody just got EMI license. I said you're crazy. Why did you get an EMI license? Get a private label wallet. Why do you want to get into this regulatory framework? Private label wallet is branchless banking with the bank, right? Yeah. Private label wallet is having a wallet powered by somebody who has a license. Yeah. Front end is yours, back end is then, but you're the face with your name. So customer आपका है. आपका दोनों का कस्टमर है. हाँ. तो मेरी कंपनी का नाम है XYZ powered by ABC. But don't you think इससे फर्क पड़ता है अगर जैसे if you're an EMI, the customer belongs to you, आपका ही है, आपका रहेगा, वो आपके साथ काम कर रहा है. अचार डालोगे इसके साथ क्या करोगे? Like at least if आपकी अगर बैंक पे डिपेंडेंसी कम हो गई है एक क्या कैसे कम हो गई डिपेंडेंसी? भाई दोनों तरफ है. तो मैंने प्राइवेट लेवल लिया, आपने EMI लाइसेंस लिया. Yeah. ठीक है, दोनों ने कस्टमर रखवाए कि मेरा फ्रंट एंड जो है मेरे नाम पे, आपका फ्रंट एंड, बैक एंड आपका अपने नाम पे, मेरा जो बैंक चला रहा है. ठीक है. ठीक है, दोनों के साथ, दोनों बैंक का भी कस्टमर है, मेरा भी कस्टमर है. बैंक से मैंने एग्रीमेंट किया हुआ, कोई भी क्रॉस सेल करोगे जो मैंने कस्टमर जनरेट किया है, आई गेट अर्निंग्स. ठीक है. Okay. Yeah, that's, Plus, but bank can actually then use my customer base to do lending. Can you do that? no, I can't. You can't do that. The money is sitting in your money sitting in an escrow account. Mine is already sitting in a bank. Bank can then lend that money. So I get a better deal from a bank. So I just need to make sure that my journey is not convoluted. It's seamless. वरना मुझे EMI लाइसेंस का फायदा क्या होगा? मैंने क्या तीर मिल गया? रेगटेक के अंदर मेरी वैल्यूएशन होगी, पैसे किस तरह बनाऊंगा? सही बात. But the fact that they will then become a digital bank, would that make a difference? The path to digital bank in Delhi. आपको उम्र चाहिए असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक. 7 साल से पहले अगर डिजिटल बैंक लाइसेंस मिल जाए तो वेरी गुड पावर. इन बैंकों को 5 से 7 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने से पहले. स्टेट बैंक नए लाइसेंस क्यों देगा? द एक्सपेरिमेंट विल ओनली गेट डन इन 5 to 7 years. So if they want to wait 7 years to get a digital bank license, great. जो पैसे नहीं बना रहे 7 साल तक लॉसेस करेंगे. Yeah, that seems to be the play right now. Yeah. But उसके अलावा, okay, so you mentioned these are the two fintechs that you like. You mentioned, But on the payment side. हाँ, on the payment side. On the lending side, the nano lenders अभी 2-3 आए हुए हैं. I've just got working with one called Foresight, which is a great group in China. There are the 4 or 3 other ones. I think they're going to make an impact on the nano lender side. BNPL lenders जो आ रहे हैं, ये 2 मॉडल जो है चले नहीं अभी आ जाएंगे. Yeah. Root Pay, if they were able to raise capital, in Pakistan, look at the Kaspi Bank model, Yeah. where the e-commerce is embedded within the bank. That's the next thing I'm going to do. Okay? I bring the e-commerce within the bank, and that is the lowest customer cost to acquisition cost, BNP lending opportunity, deposit indemnity,
individual inquiries coming just for the e-commerce stuff. Obviously, you need the logistics side and you need the warehouse side, but Zood has got international way to figure that out. And Caspi Bank is a great example. 12 billion की valuation हो गई है just because of this model. ये सब banks बैठे हुए कुछ करना नहीं चाहता. This is another thing that next thing that I do when I talk to you a year from now, this would be done. But what do you think about Kiss Bazaar and Bank Alpha Mall and all of these people are in that space, right? Very limited. Yeah. Very limited. Very limited. Bank Alpha is the closest who's come to it, but you have to go the whole hog in this. Yeah. Okay? You can't be a platform only. You've got to have the drop shipping, you've got to have the warehousing, you've got to do the whole shebang. They've just done the piece where they've got vendors coming in and just putting this stuff. But like I said, you have to do the whole play over here and then you get the benefit. ठीक. So lending not just nano lending, BNPL. Are going to be big. Yeah. Whether it's for phone, whether it's Kiss Bazaar with a Q, Kiss Bazaar with a K, Kiss Pay, दोनों both are very good companies. Yeah. Arif Lakani and Asif Jafri, Yeah, very yeah. smart people. Yeah. Okay. फिर supply chain में आ जाओ. हसीब की बात की तुमने जो supply chain करने जा रहे हैं. That can be big, but all of them, these guys need to have banks and they haven't been able to get bank other than Hubble. Hubble is just another outlier. Yeah. Umar bin Hassan, worked his ass off, really worked hard, and he got to where he is right now. Yeah. And he's going to go places. क्योंकि अभी तो वो बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा वाला काम जो वो भी रह गया है, retail level का, he's doing distributors. Yeah. Smart guy, but worked hard enough. So that model will also work. The supply chain model for people who've got that. People can replicate that, लेकिन 2-3 साल लगेंगे. जो हसीब काम कर रहा है ऐसे जो इन्होंने बाकी 4-5 कंपनीज और हैं जो ये काम में credit pay and all that. They are going to get constrained. They've raised some capital, but if you want to have $100 million book, you can't raise $100 million of equity. Yeah, of course not. And no banks is lending money against that. Banks are so conservative. अभी कुछ पैसे देता है, but उनकी अपनी finite है. अभी का अपना जो transaction हुआ है, that's going to help them. Yeah. Do further what we can talk about that. I think it's going to be interesting. Yeah. So what do you think what do you think the play is there? I know you're also part of you're a shareholder in Abhi as well. And how do you see that? My information is public information, okay. Not as a shareholder because I'm a very small shareholder. Okay. So, Finca, bank licenses are worth what? Bank licenses are worth because you get retail deposits. ठीक है, yeah. SECB के अंदर the only thing you can get if you meet certain conditions is COI, certificates of investments, but nothing like retail deposits. So the reason people want a bank license is to have retail deposits, so be able to lend. Now Abhi has a very good track record of lending. They started earned wage product and then they did invoice discounting. But then they had funding issues. When I helped them raise, a big TFC and everything, Sukuk and everything, but that's expensive. So if you have a bank which has got lower cost of funds and you have Abhi's business model, they'll sunset the traditional banking, the microfinance portfolio and take the Abhi lending portfolio, put it over there and use those cheap cost of funds. So it should be a very interesting proposition. So that's okay, fine, and that's because as eventually, जो सबका goal है और जो होना भी चाहिए is to be able to get retail deposits because that's where you can start lending as well. That's right. So the key, key is lending. In order to lend, you need retail deposits. Retail deposits, you either need a license or you need a partner who is willing to give its balance sheet, which probably the digital banks will be willing to do. Yeah. Because if the digital banks are going to lend, they have to do database lending. Where are they going to get the data from? Because they're starting today. So they're going to find partners which have data, but have no licenses. So that's where that marriage will take place. Okay. But what do you think in terms of जो पाकिस्तान में infrastructure missing है to lend? And like I'm glad you mentioned data because that's something that I've been thinking about. ये data बाकी markets में किस तरह से बनना शुरू हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी आपके पास वो इतना अच्छा customer data नहीं है to be able to make lending decisions algorithm based. कर सकते हैं. देखो अभी नैनो लेंडिंग ने 6 मिलियन कस्टमर किस तरह बनाए. चलो 6 मिलियन कस्टमर लेट्स से 4 मिलियन इजी पैसा और जैस के पास है. ठीक है. उनके पास क्या डेटा है? उनके पास जीएसएम डेटा है. उनके पास मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉलेट का डेटा है. फाइनेंशियल डेटा इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल क्रेडिट डिफॉल्ट. तो वॉलेट का डेटा है ना, और लोगों के पास वॉलेट का डेटा ओपन बैंकिंग खुलती है. दैट्स व्हाई ओपन बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. I think that अगर आई एम गेटिंग इनटू नैनो लेंडिंग, आई बिलीव आई हैव इनफ डेटा. मैं फ़ोन से ले लूँगा,
ओके, इफ आई गेट वन GSM पार्टनर अनोनिमाइज करके मैं GSM लेंडिंग कर लूंगा. ठीक है. और कुछ और डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है. इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स इनफ टू क्रिएट 10 million customers. That's my ambition, to have 10 million nano loan customers. Okay, it's doable. Is there room for more data? Absolutely. Yeah. ओपन बैंकिंग खुल जाएगी तो ये डेटा जो है बैंकों का नहीं है, दे कस्टोडियन, वो तो कस्टमर का डेटा है. आई शुड बी एबल टू गेट माई डेटा फ्रॉम अ बैंक, यू नो, लाइक दैट एंड पास इट टू अ थर्ड पार्टी बेस्ड ऑन माई अप्रूवल. ओपन बैंकिंग क्या है, इफ यू कैन एक्सप्लेन? देखो, ओपन बैंकिंग लोगों को समझ नहीं आती. ओपन बैंकिंग प्योरली इज टॉकिंग अबाउट द डेटा, अ कस्टमर डेटा दैट एग्जिस्ट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट विद. ठीक है. यूरोप में तो उससे बियॉन्ड चले गए कि आप कोई भी एंटिटी अगर कस्टमर डेटा होल्ड कर रहे हैं, यू हैव टू मेक दैट अवेलेबल. Let's say we stick to banking. Banks, okay. And then telcos. But telcos बैंक के पर्व्यू में नहीं आते, वो आपस में लड़ाई करते हैं कि जी पहले telcos को भी लेके आए. Forget that. मैं स्टेट बैंक में होता है, क्या था, इंडिया ने किया भाई, जो मेरा डेटा है इस वक्त बैंक के पास, मेरा बैंक अकाउंट, मैंने अगर एक थर्ड पार्टी, मैं नैनो लेंडर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे लैंड चाहिए, वो कहते हैं अपना बैंक अकाउंट दे, तो पहले तो मैं बैंक ब्रांच जाऊँगा, उसमें मैं करूँगा यार अकाउंट प्रिंट करो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक जब कहूँगा बोलेंगे पता नहीं तुमने फर्ज किया हुआ है. हाँ, ठीक है. तो वो स्टेटमेंट निकालेगा, फिर वो कहेगा इस पर ठप्पा लगाओ, फिर वो ठप्पा लगाएगा, फिर वहाँ मेरा बंदा लेके आएगा, फिर मैं उसको क्या नाम है स्कैन करके अब जाके नैनो लेंडर को दूंगा. 2-3 दिन तो लग गए ना. सही बात. इससे खत्म हो गया. आई शुड बी एबल टू डायरेक्ट द बैंक कि भाई माई डेटा शुड बी प्रोवाइडेड टू XYZ बेस्ड ऑन माई अप्रूवल. राइट, दैट्स व्हाट ओपन बैंकिंग इज. फोर्सिंग द बैंक्स टू have the customer provide the customer data to a third party based on their approval electronically. So India's created a regulation where they've created third party data, people के, and उनको उन्होंने obviously criteria बनाए. They can get any data from a bank based on the request from the customer and provide to a third party. Okay. And based on that the third party immediately मुझे आपका account statement आ गया, मैंने अपने क्रेडिट अंडरराइटिंग में डाला. I know what limit to give you or not to give you because I have your primary data which is the banking data. पाकिस्तान में क्या हर्डल है ये करने में? पाकिस्तान में हर्डल ये है कि कोई बैंक करने को वॉलंटरी तैयार नहीं है. सही. और जब तक कोई बैंक जाता नहीं है स्टेट बैंक के पास, वो कहता है कि जी मुझे सैंडबॉक्स में डालो, वो पैसे पड़े हुए हैं वर्ल्ड बैंक के, स्टेट बैंक में. मैं करूँगा अभी इंशाल्लाह अनकरीब करूँगा. ओके फाइन. सो बेसिकली रेगुलेशन मिसिंग है इस वक्त. रेगुलेशन आ जाएगा, फिर पहले सैंडबॉक्स में जाएगा, फिर रेगुलेशन आ जाएगा. Okay, that's interesting. In terms of regulation and regulators, India या इस तरह की similar markets like say जो हमारे टाइम पे एक टाइम पे जो इसी पोजीशन में थी, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या रेगुलेशन है जो हमारे पास अभी मिसिंग है, हम करने वाले? Like I also want your views on Raast and where do you think Raast needs to go? Raast is going in the right direction. It's going to take its time. It's a big change in Pakistan. देखें ना, UPI आया, but UPI के साथ 2-3 और पीसेज हैं जो हमारे अभी तक नहीं बने हैं. बट यूपीआई ने जिंदगी चेंज कर दी ना. और कौन से पीसेज हैं उसके पास? डिजिटल आइडेंटिटी का पीस है, डिजिटल लॉकर का पीस है, वो अभी तक नहीं आया है, तो वो आ रहा है. और सिग्नेचर्स का भी एक लेयर है वहाँ पे. हाँ, डिजिटल सिग्नेचर्स का भी एक लेयर है उसमें. तो वो सब पूरा एंटिटी आ जाती है ना. अब हमारे पास रास्त आया, P2P आए, ठीक है, और P2 क्या ना, वो बिजनेस मर्चेंट टू P2M. अभी मर्चेंट टू बिजनेस मर्चेंट आने वाला है. Okay, so there are different pieces are coming. Raast also needs to be put into a separate subsidiary which the state bank has thought of with independent directors. Raast का बड़ी बात क्या है, इंस्टेंट सेटलमेंट है यार. IBFT वाला T+1 नहीं है. फौरन आ जाते हैं, फौरन होता है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई नहीं लगते, और 25,000 से नीचे मुफ्त है एंड डिफॉल्ट है. तो Raast is catching on and it needs to get, and as it becomes more popular, it will make lending easier, it will make financial inclusion easier. So we are getting there. We started late. हम बहुत आगे थे बहुत चीज़ों में. हम we stopped, but forget जो हो गया, जो चला गया उससे भूल जा, आगे देखेंगे जो हमने आगे अब क्या करना है. बहुत अपॉर्चुनिटीज है. My entire investments I now 36 investment in Pakistan and I'm putting 6 more. This is where the action is despite all the problem. बिजली नहीं है, पानी नहीं है, साथ मसले होते रहते हैं. But that's the playbook ना. इसी playbook में खेलो ना. You're first class citizens over here ना. Yeah. You never get this opportunity anywhere else. You may be a millionaire. I'm a millionaire multi times over. So what? बाहर जाऊंगा तो वही करना पड़ता है ना. यहाँ तो you have a different world of what you can influence, what you can do, what you can execute.
So, okay, this is a very interesting point. This is something I wanted to ask you कि अगर मैं एक से 25 या 30 साल का पाकिस्तानी हूँ और मैं काफ़ी डिसइल्यूजन हुआ हूँ करंट जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, मैं किस तरह से पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचूं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. देखो, मैं आई वॉज 48 व्हेन आई केम बैक. ओके. मैंने 27 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे. मैं प्रीच नहीं कर सकता 27 साल को कि बेटा पाकिस्तान का फ्लैग पहनो, उधर डटे रहो, ये तुम्हारा मुल्क है. खुद तो मैं एक बाहर करके से भाग, सो आई कैन नॉट से दैट. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 7 ममालिक में रहूँ, डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, फार ईस्ट में, यूएस के अंदर, हर जगह रहूँ. एंड द क्वालिटी ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सही है. Quality of life in Pakistan cannot be beaten. Your parents are around, your family is around, you speak the language, you're considered first class citizen. Standard of living ठीक है, नहीं है, आपका बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सिक्योरिटी चाहिए, फर्क है. एक 27 साल वाला है, अगर उसको बाहर अपॉर्चुनिटी है, उसको जाना चाहिए. ठीक है. खुद ही वापस आएगा अगर आना होगा. ओके. बट दुनिया देखनी चाहिए. दुनिया देखनी चाहिए, वो तजुर्बा करना चाहिए. I could never have done EasyPaisa if I didn't have the Citibank experience in 7 global markets. It gave me confidence. ओके. तो अगर अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर बाहर जाओ. कोई ब्रेन ड्रेन की फिक्र नहीं कर, हम आप बतेरे लोग हैं, छोटी कंपनियों. ओके. मिलियन प्लस लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं. सही है. अगर उसमें 10,000 चले जाते हैं, जाने दो. 20,000 जाने दो. डियास्पोरा बनेंगे, पैसे वापस भेजेंगे, और अगर लगेगा अपना कैपिटल लेके वापस आएंगे अगर हमारे हालात बेहतर होंगे. ठीक है. सो आई एम टेलिंग देम, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, गो. मैं नहीं कह रहा यार मुहिब वतन बनो, बस का वक्त आएगा. जो नहीं जा सकते बाहर, सब तो नहीं जा सकते ना. सही बात है. फिर किसी बिजनेस आइडिया का सोचो जो कस्टमर जर्नी को चेंज करे. चेंज द कस्टमर. ये जो सेम आइडिया, आई यूज्ड टू लुक एट 10 pitches a week. You have to have an idea which changes the customer journey. उसके बाद देखो तुम्हारे पास लोग हैं जो तुम्हें, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरशिप सब लोगों के लिए नहीं है, ये बड़ी कठिन चीज़ है. इसमें you will get so many failures before you get success. So be prepared for things not working out the first time. Become a serial entrepreneur. ये नहीं एक बार हाथ जल गए तो बोले छोड़ो, रेस हो जाओ यहाँ से. And that's what you mentioned about the pivot वाला, वो भी as well. Pivot भी है और देखना भी है. तो इसलिए जब लोगों को देखता हूँ ना, तो एक तो सब बंदे समझते हैं कि कंपनी जो है ना $10 million की वर्थ है. अभी आइडिया भी नहीं हुआ है ना $10 million की वर्थ. ठीक है, मेरे पास कंपनी है आइडिया की $10 million की. वाई? Because I have a track record of delivery. So people said, okay, अगर इसके पास आइडिया है, इसने पहले डिलीवर किया है, we are willing to take that bet. I had ideas and people valued it $10 million and I raised money, not 10 million, but valued at 10 million. So if somebody comes in who's never done a business before or has 2 years of running a business before and says, जी मेरी business 10 million है, मैं execute करूँगा, तो how do you have that confidence to execute करेगा या नहीं करेगा? Track record तो कोई नहीं है ना. So another thing that I want to ask you amongst these is कि आपने mention किया था कि fintech के अलावा भी opportunities हैं पाकिस्तान में which you are interested in. So अगर मैं एक founder हूँ और मैं उसमें वो जाके देखना चाहता हूँ, कौन सी वो opportunity? देखिए, मैं कह रहा हूँ आप सेगमेंट को छोड़ दें. आपकी लेंस होनी चाहिए, क्या मैं कस्टमर जर्नी चेंज कर सकता हूँ? 2 महीने की कस्टमर जर्नी में 2 घंटे में कर सकता हूँ. 2 घंटे की कस्टमर जर्नी में 2 मिनट में कर सकता हूँ. Can I change the customer journey using tech? अच्छा, जर्नी सिर्फ या मैं प्रोडक्ट को सस्ता भी कर, मतलब क्योंकि पाकिस्तानी का मार्केट आई जनरली फील इज अ प्राइस सस्ता is a slippery slope. Okay. Because easy to replicate. All you need सस्ता is capital to be able to take losses. ठीक है. Okay, तो प्राइस में आप कभी नहीं जीतेंगे. Unless you are a very long term investor with very deep pockets, then you can basically screw the market by undercutting everybody. ठीक है. सस्ता जब आता है जब आप फाइनेंशियल कंपैरिजन दे रहे हैं, ठीक है, दैट मॉडल मे वर्क इफ यू कैन मोनेटाइज योर लीड्स. हमारे पास एक कंपनी थी डिडंट सक्सेसफुल क्योंकि बैंक लीड के लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे. एंड दे वर कि जी हमारी लीड है, आपकी लीड है, या 6 महीने के बाद पैसे आएंगे. आई कांट कैरी एन इंस्टीट्यूशन फॉर 6 months. कस्टमर जर्नी चेंज करने के लिए कस्टमर पैसे देने को तैयार है. मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको EasyPaisa कर दिया था, जहाँ आप कस्टमर जर्नी चेंज करते हैं, सहूलत लेके आते हैं, कन्वीनियंस के वो जहाँ बैठा हुआ है वहीं से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. अब ये मतलब कहना, एंड आई से दिस एंड माई प्रोटेजेस एट बैंक फलाग गेट टू मी कि जी एक लाइफस्टाइल ब्रांच बनाइए. पहले मैं जमजमा में पार्किंग ढूंढूं, आधे घंटे के मैं पार्क किधर करूं, फिर मैं पार्क करके जाऊं एक ब्रांच के अंदर टू गेट अ डिजिटल एक्सपीरियंस. एंड देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. डिजिटल ओके हैज़ टू बी. इन्होंने जो CDM मशीन बनाई है, दैट्स
Yeah. Outstanding. Yeah. You know, they're cutting at next generation. But lifestyle branch is beyond me. Maybe they say reason. So, you know, more power to them. Has to be on this. घर पे बैठ This के is your yeah. life. ठीक है. This is your educational institution. This is your bank. This is your doctor. This is your entertainment center. This is your order form. This is everything. So everything I do has to be on this. So कस्टमर जर्नी चेंज कर रहे हैं और कस्टमर उस जर्नी चेंज के लिए पैसे देने को तैयार है. दैट मीन्स जो आपने टेक रेवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, 20 पेजेस का बैंक अकाउंट में बेंच होता है, 20 पेजेस का और 18 सिग्नेचर्स हैं उसके अंदर. सो व्हाट रकमी इज डन इज डिजिटाइज दैट इनटू वन पेज फॉर्म, एवरीथिंग एल्स ऑन appendices, and I can open an account hopefully when the entity is launched, you know, in an hour. मैं SCCP से इंटीग्रेट करके मोमार्ट्स मंगा के क्या नाम है करके मैं कर लूँ. अगर तो 1 घंटे में अकाउंट खोलता हूँ जो 1 महीने में नहीं खुलता. That's a change in customer journey. 100%. And even if it's not 20 pages, मेरा बैंक से मसला ये है, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में मुझे इतना ज़्यादा है. जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत ही नहीं है क्यों मांगूं? Yeah. Also the stamp. I don't know the obsession with Pakistani banks have with stamp. उससे कुछ नहीं प्रूव हो रहा. कुछ नहीं होता. तो वही मैं कह रहा हूँ, जो नॉन लीगल चीज़ें निकाल दो ना, एक कन्वेंशन के साथ नहीं चलो ना. शेक द मार्केट ना. सो इज द कस्टमर विलिंग टू पे फॉर इट? अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अकाउंट 1 घंटे में खोल लूँ तो आई एम गोना गेट अ स्लू ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कमिंग टू मी, ओके, एंड देन आई एम गोना गेट सम डिपॉजिट आउट ऑफ देम, देन आई कैन सी यू नो हाउ कैन लेंड टू देम. थर्ड, कैन आई स्केल इट? वॉल्यूम के बगैर तो गेम ही नहीं आता. ठीक है. तो यू डोंट सी किस सेगमेंट में जा रहा हूँ. अगर इस सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट ले लो तुम, उस सेगमेंट में ये अपॉर्चुनिटी, लॉजिस्टिक्स का सेगमेंट है फॉर एग्जांपल, या ये से मैंने कहा कि कंपनी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स का सेगमेंट है, इन्फ्लुएंसर मार्केट है, लाइव कॉमर्स है, ये जो चीज़ें हैं, जो भी सेगमेंट है, यहाँ अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है बाय डूइंग दिस, देन आई थिंक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अब ये तो आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, आपने देखा यार कस्टमर जर्नी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैंने मतलब कि थोड़ी फोकस ग्रुप किया, मुझे लगता है पायलट भी है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है. फिर भी पैसा नहीं मिलेगा, अभी 1000 में से 5 को मिलेगा. सो देन आई हैव टू बूटस्ट्रैप इट फॉर एटलीस्ट 12 months. ये दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ राइट नाउ इज. वो बूम पीरियड चला गया कि अब हर बंदा जो कहता है उसको पैसे वीसीज फेंक रहे थे. एक तो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन है वीसीज का, दूसरा पाकिस्तान जॉन्डिस्ट है विदाउट डिप्रिशिएटिंग करेंसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो यहाँ तो जो पुराने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं, या मतलब कि बहुत ही कोई एग्रेसिव है, दे रियली लाइक द बिजनेस, जस्ट 1 in 500. कितने पैसे रेज हुए इस साल टोटल? बहुत कम हुए, 20 मिलियन से भी कम हुए. हाँ, समथिंग अराउंड दैट. मैं डिजिटल बैंक को निकाल दूँ, या ओके, तो कुछ भी नहीं है पैसे रेज हुए. कंट्री लाइक पाकिस्तान तो पैसा नहीं मिलेगा बाहर से. दैट मीन्स आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा, एंजल्स ढूंढने पड़ेंगे जो करने को तैयार है. दैट्स द सेकंड थिंग. बी प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट गोना रेज मनी at least for minimum 12 months where you are beyond your MVP, और उस वक्त आप ग्रोथ कैपिटल मांग रहे हैं, आप रिस्क कैपिटल नहीं मांग रहे. रिस्क कैपिटल तो तकरीबन नामुमकिन है. सो ग्रोथ कैपिटल की स्टेज होती है जब मेरे पास एक मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, ये मैं बेच रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई पैसे देने को तैयार है. सब ग्रोथ कैपिटल है कि देखें ये मेरा MVP है, ये मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स है. ठीक है. ऑल आई नीड टू स्केल इज नाउ फॉर दिस यूनिट इकोनॉमिक्स टू वर्क. Okay, my customer cost of acquisition is this is going to drop appreciably because when I get into volume, lifetime value मेरी ये है, मैंने दिखा दिया है, साल हो गया, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं. ओके, मेरे पास अपनी टीम मौजूद है, अब मुझे मार्केटिंग करनी है, कस्टमर एक्विजिशन क्लोज करना है और कस्टमर एक्वायर करना है अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ. दैट्स ग्रोथ कैपिटल. ठीक है, मैं समझ गया. एंड प्लैनेट एन और आप किस स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं? हम तो सीड और प्री सीड पे करते हैं. बिल्कुल, जब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे करते हैं. ओके, फाइन. दैट्स व्हाई वी टेक द रिस्क. Okay, उसकी two tiered question. Number 1, why do you come in at that stage? In my view कि जब आप जा रहे हो 1 साल के बाद कंपनी वैल्यूएशन चेंज होगी, देन आपने रिस्क तो एक्वायर कर लिया है ना. आपने कह दिया जी मैंने जो इनिशियल रिस्क था टू गेट द यूनिट इकोनॉमिक्स डन, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द कस्टमर, वो मैंने कर लिया है. अब मेरी वैल्यूएशन आ गई है. ठीक है. मैं तो जब करता हूँ जब वैल्यूएशन ही कोई नहीं होती है शुरू में. हाँ, तो मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. 70% on the jockey, which is the founder. 70% is on the jockey. 20% is on the horse, which is the idea. ठीक है. Okay. 10% is on the turf. कि मार्केट भी सही है इस आइडिया की कि नहीं है. तो मैं तो फाउंडर पे इन्वेस्ट करता हूँ पहले 10 मिनट में करता हूँ.
So how do you determine if the jockey or the founder is worth investing? देखो जॉकी तो बड़ा आसान है. अच्छा. Sorry जॉकी नहीं, घोड़ा तो बड़ा आसान है. हाँ, आइडियाज बहुत सारे. I know the market. Yeah. मेरे पास कोई बंदा आ रहा है, फिर एक कोई ई-कॉमर्स का लेके आ गया. ई-कॉमर्स खेलने के लिए $50 मिलियन की जरूरत है. Yeah. कितने पैसे नहीं होंगे ना. Yeah. तो वो तो आइडिया तो मैं आराम से निकाल लेता हूँ. 10 और लोग ये कर रहे हैं कि ये बड़ा ओरिजिनल आइडिया. ओरिजिनल किधर 10 लोग गॉल कर रहे हैं. अच्छा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर ओरिजिनल आइडियाज, आई एम लुकिंग फॉर आइडियाज. EasyPaisa was not an original idea. EasyPaisa I got based on M-Paisa, yaar. Yeah. So you have to be able to take the good and see how you can adjust it for local conditions. So I'm not looking for somebody coming with a Facebook idea. I'm looking for somebody that has got an idea from outside but is relevant to Pakistan and can be scaled. Okay. Main चीज आती है जॉकी के ऊपर. हाँ. और वो तजर्बे से आता है. And I don't get it right every time. It's what, I get in that half an hour meeting I have with the founder. कि आई थिंक दिस गाय इज गोइंग टू बी स्टैम्प. मैं एक सवाल होता है कि कितना सारा खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा. जैक मा ने कहा था कि रात को तूफान आएगा, देयर विल बी स्टॉर्म इन द नाइट, दोस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द मॉर्निंग हैव अ चांस टू सर्वाइव. रात को गिर जाएंगे लोग. तो ये गिरेगा, ये खड़ा रहेगा. और आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं? सो बेसिकली फॉर यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर ट्रेट इज रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस. स्मार्ट, आई मीन स्मार्टनेस इज ओवरवैल्यूड. हाँ, मुझे आई एम लर्निंग द सेम थिंग. देखो तो वैल्यू आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द विजडम. ठीक है. Yeah. The person has to be as smart or smarter than me. Okay. Not easy, but possible. Okay? But possible. Okay? So as long as it's possible. Very different. I surround my people smarter than me. Okay. But not wiser than me. Okay. वो भी possible है. वो भी possible है. Wisdom आती है तजर्बों से. Not just age, but obviously you age more, then you have more failures. Yeah. So imagine we're in a building. It's a 100-floor building. I am on the 70th and you're on the 50th. My horizon is longer. Yeah. So I can see and I can connect the lot better than you can, and you think I'm a genius. I'm not. Just my horizon is longer because of the wisdom I've acquired. There'll come a time when you'll be on the 90th and I'll be on the 80th. Okay? So some of the founders that I have are going to be bigger than me at one time. That's my ambition. That means I've taught them well and they've now grown on their own. So you need this combination of wisdom and smartness to make this thing work. And I think I provide the wisdom and some level of smartness, and these guys have to be smart. Resilience is very important. Willingness to pivot and learn is too important. Not being arrogant and humble is going to be important. Being slapped 10 times with a no and being able to stand up in the morning is important. So that's the kind of traits I'm looking for in a founder. And how, so in the instances that you've been wrong, do you think it's because you picked the wrong founder? You think और चीजें नहीं चली यार, घोड़ा नहीं चला या? तीन चीजें थी. कुछ instances में the founder was smart enough to outsmart me in my assessment of them. Achha, okay, fine. They talked a great talk, but they couldn't walk that talk. Okay, fine. And I felt they could walk the talk, so I made a mistake on the founder. So that was one tick. कुछ instances थे जहाँ founders were right, but the idea took much longer to gestate, and it was before its time. And therefore we ran out of money. And I didn't think it was smart to put more money because we were too early and they would just wouldn't work. Okay. And third के अंदर just the idea was wrong. It's a bad idea. And but उसमें वो pivot नहीं कर पाए time पे. नहीं pivot कर पाए, नहीं बहुत try किया, नहीं pivot कर. So I know when to cut my losses. हाँ. I'm not going to beat up. जब मेरे losses हो गए, मेरी वो market में बताया I lost $5 million. I cut my losses. I didn't try to recover a 5 million. I would have lost another 5 million. Yeah, no, absolutely. But so I appreciate that you shared कि जी your biggest losses have come when you felt arrogant. So एक तो arrogance हो गई. उसके अलावा what have you learned from your own failures and your portfolio's failures? Like क्या? My failures were that arrogance in the sense that everything that I do would turn to gold. Not knowing that business. Everybody can't be knowing everything. Na? There are certain disciplines that cut across everything that you do. But within that, there are certain segments which are very, very specialized and require something. एक तो failure बताया ना, grey area failure था ना, जहाँ मुझे जाना ही नहीं था. I can't operate in the grey area. Yeah. कुछ failures थे where scale नहीं हुआ. We thought the market opportunity was there, but the market opportunity couldn't be scaled. And therefore the company couldn't take off. It was making money, but not enough money. It doesn't make any sense. Lot of failures because
I originally underestimated the amount of capital that would be required to get to scale. Okay. Yeah. Okay. So again, underestimating the uptake of that idea and the cost of that uptake. Because फेलियर ही होता है ना. देखिए आपने कहा यार आइडिया बड़ा अच्छा है, एक कस्टमर ने एक्वायर कर रहा हूँ, उसके $10 लग रहे हैं, बट पहली लाइफ टाइम वैल्यू जो नज़र आ रही है वो अगर वो एक लोन करके निकल जाता है $2 मिलते हैं मुझे. तो इफ आई डोंट गेट दैट रिपीट मैं $10 की तरफ जा ही नहीं सकता. तो एवरी टाइम आई एक्वायर अ कस्टमर लूजिंग मोर मनी. ठीक है, समझ गया. सो यूनिट इकोनॉमिक्स लोगों को समझ नहीं आती. तो बड़ा मेरा फोकस होता है यूनिट इकोनॉमिक्स समझने का. आफ्टर आई अंडरस्टैंड द फाउंडर एंड आई से यूनिट इकोनॉमिक्स, लेट मी सी हाउ वी आर गोइंग टू स्केल. This game is about scale, having enough capital till you can reach scale. And when you get that right, I've got it right. God has been kind. We have more exits than all the VCs combined in Pakistan. More profitable than all the VCs combined in Pakistan. Yeah. So I think you have the best venture return track record so far. God has been very kind. No, that's excellent, and also your portfolio speaks quite highly of you, right? In terms of the value you've provided. I've had the privilege to work with some of the startups that are part of Planet N, and especially the successful ones. They've been quite helpful. They've been quite they've always sang praises कि किस तरह से वहाँ पे support मिली है. इसमें आपके ये VC मॉडल और मेरे मॉडल में फर्क है. हाँ, what is that difference? Yeah, the big model is VCs are investors who invest the money. I mean, they have more money. They've invested more money than I have, certainly. Yeah. I just said I'm more successful. I didn't say invested more money. They meet you once a quarter. You get an update on the board. I am into my companies as to where the pain point is with the regulator, opening doors, with the rating agency, with the auditors, with the taxmen, with the agencies. जहाँ भी वो फंसते हैं मैं खड़ा होता हूँ ना. Yeah. So I understand exactly where they are and what they're doing and how to scale them. And I had frequent meetings to make sure that they're getting onto the right path. When they get to a level, then they only call me when there's trouble. Then I'm waiting for the dividend check. But to get there, I'm very active that way. And God, again, I keep saying this because, yeah, dekho, I'm 68. Every day I live is a blessing from God. Okay. So, and I'm doing more work than I was when I was 48. Because I'm enjoying this is my turn on. This is my high. It's to creating new companies, changing lives of the people who own the companies and changing customer lives. That's what, my natural high, and I feel excited. Therefore, I never ever, people can't keep pace. My young, founders don't keep pace with me. Yeah, I know. I was telling you earlier, whenever I meet you, I feel like youth is wasted on the young. That phrase by George Bernard Shaw, that rings more true to me. एक चीज़ जो one thing I wanted to ask you was around, आपने बीच में एक initiative था 10xc. I remember that, right? उसके बाद से for some reason you got a bad rep, or at least Planet N or 10xc got a bad rep कि ये बड़ा predatory investment है. कि वो $10,000 देके बहुत बड़ा चंक बिजनेस का ले रहे हैं. What I now understand is कि those businesses were really micro businesses to begin with. But what was your experience around that, and what do you think? 10xc was a failure. Okay. Failure on two accounts. एक $10,000 से business नहीं चलती है. बिल्कुल. So our chunk should have been $100,000. Yeah. Okay. That we should have been able to put $100,000 on the table to make that experiment work. None of the 10x company survived because $10,000 में you can't get ready MVP तैयार करके next level जाने के लिए. ये हमारी गलती थी. उसमें हम equity ले रहे थे, ठीक है, ज़्यादा ले रहे थे, कम ले रहे थे. These people came willingly, किसी को force नहीं किया. Yeah, of course. So, but we were the only people even willing to put $10,000 on the table and took a bet. We lost money in that. Yeah. So again, lesson that you need to put enough money. Just putting money is not enough. You have to put enough money that you're ready for the next raise. If you don't have that runway, then you're putting bad money is going to get tied up. So मेरे पास लोग आते हैं सर $50,000 दे दें, आपके पास तो है, आपको क्या मसला है. मैंने कहा भाई तुम्हारे $50,000 से तुम कहाँ तक चलोगे? Because this is just going to go down the tubes. You're going to need that money to be ready for the raise. Raise takes 6 months minimum. तो वो तो 6 महीने तुम्हारे वहाँ चले गए. अभी तुम तैयार ही नहीं हो तो भाई तुम $50,000 की क्या करोगे? So अगर अभी मैं एक founder हूँ, say for example I'm working at a bank, I'm a 35-40-year-old who now wants to do a fintech, उसको पैसों की आप उसको क्या advice देंगे कि कब business उसको शुरू करें? When should they jump ship? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है. There are 3 times in life where you jump ship. या तो आप कॉलेज के बाद इमीडिएटली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं. उसके प्रोज एंड कॉन्स किया है. उसका प्रो ये है कि आपके पास
अभी बिजली का बिल नहीं देना, किराए का बिल नहीं देना, खाने का बिल नहीं देना, अब्बा जान अम्मी जान सब्सिडाइज कर रहे हैं आपको, तो आप जो भी आप कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस. शादी नहीं हुई है, मॉर्गेज नहीं है, ऑटो लोन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है. सो दैट्स द टाइम वे यू कैन एक्सपेरिमेंट without having multiple liabilities that you have to worry about. The con is that you have no experience. Yeah. Okay. And you're going to learn on the job. So therefore, probably first 2, 3, 4 companies are going to be failures. And you need to have somebody who's going to bankroll you till you get to your right idea. Many ways, that's the best time. Okay. Because you learn. You don't have to do any de-learning that you go and learn in a company, because you have to de-learn. हाँ, ये तो वो आपकी learning शुरू हो जाती. So if you've got that spirit and you've got parents who are willing, or uncle or friends and family willing to help you, that's a great time. दूसरा time is the time when I became an entrepreneur at the age of 48. I had enough money. ठीक है. ये बात और है कि आखिर में मैंने सब लगा दिया, all in, Texas Hold'em type. लेकिन if I didn't have to put the last million, I had enough money that I could, not a great lifestyle, but I could pay my kitchen expenses and everything else. So you have enough money, you put a portion in, or I put majority of it in. I want the bulk of, I sold my share, I sold everything to take the equity of 60% in Tameer Bank initially. But बहुत कम लोग होते हैं, because you get into such a lifestyle trap that you can't think of not having, that expenses to be able to pay, because startup में पहले साल में तो पैसा ही नहीं आएगा आपके पास. हाँ, काफी सालों तक अक्सर नहीं आता, 2 से. अब आप आ जाए somebody who is in the middle, 30, 35 years old. Yeah. Married, 2 kids, auto loan, possibly a mortgage. If the bank has got a subsidized loan, अब वो जब वो छोड़ के आता है in the world of entrepreneurship, उसको perks चले जाते हैं. That's a big hit. Yeah. And you got liabilities, you got to pay kitchen expenses, you pay education, you got to pay all those loans. वो पैसे कहाँ से आएंगे? So it's a tough thing. So you got to get into partnership, you got to think about something, and you got to be able to lose all that. And that's a very tough proposition. Because you're right in the middle, you don't have enough saving base that you've built, you have liabilities that you're paying off, and now you want to go in the world of entrepreneurship. So maybe 1 in 100 succeed, but बाकी 99 while they're tough होते हैं, then they go back into the world of salaried class. But if you're really passionate, then you take that plunge and you hope for the best. And if you don't get it right the first time, you hope for the second time. So coming back to failure, say अगर इस situation में जो fail होता है, उसकी absolute worst downside क्या है? Do you think this whole experience of entrepreneurship would still make them net positive, even if it's not monetarily? Not in this market. Okay. हमारे यहाँ तो failure is big stigma unless you recover. Yeah. अच्छा खासी नौकरी में था, बहुत करना चला गया, वहाँ मार खाई, अब नौकरी नहीं मिल रही 6 महीने के लिए, साल के लिए. Yeah. Once you're out of the industry for a year, it's not easy getting back in. Okay. Now it's possible, but not easy. So it gets where you get into a double trap. Business नहीं चल रही, getting back into the world of salaried class then becomes more difficult. ये भी होता, मेरे पास एक लोग आए, I met somebody the other day, did exceptionally well, became a country manager outside Pakistan, superstar over there, came back. Expectation is same that he had over there. I said, तुम किस दुनिया में रह रहे हो बाबा? वो दुनिया खत्म हो गई. You're starting from, not scratch, but way below where you are. Just get in right now. Start and rebuild again. That's the price you pay for leaving Pakistan and being outside, that you're outside this market for 5-10 years. No one's going to give you value for what you've done outside. Okay. Unless there was very similar things happening over here which you didn't have. So it's not an easy thing. You could lose everything. I nearly lost everything I had, but God was kind to me. I stayed the course and I was able to, people had confidence, I was able to recover that and then recover some more. So, it's not for the faint-hearted. ठीक है, yeah. Okay, and you have to be prepared for failures. Learn from your failures and then move on. So if I were to just put a framework around it, जितना आप early अपने career में होते हैं, उतना आपका downside कम होता है. कम होता है उसमें. पर उतना आपका experience भी कम होता है, but still better in the trade-off. As early in your career as you want. And later as you go in your career, the risk is much higher. Like for you when you were leaving Citibank. Yeah. So if things did not work out, what you would have done? Did you ever think about it? कि अगर नहीं चला कुछ तो क्या करूँगा मैं? I thought मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी ना. हाँ वो तो. I've been very successful. मैं अगर नौकरी मिल जाएगी, but मुझे अगर नौकरी करनी होती तो मैं बाहर ही रहता, मैं क्यों आता? सही. But I never thought I was going to fail. Okay. वो कहते हैं इकबाल का शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा.
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल मैवे तमाशाए लबे बाम भी। तो बेखतर कूद पड़ा मतलब कि विदाउट एनी फेयर। आतिश नमरूद ने कहा था मतलब ये तेरी आग जो है ना, ये अगर तेरा खुदा है तुझे बता लेगा, हाँ। कूद जाओ इस आग में। तो मुसा आग में कूद गए, अल्लाह ने आग को उसकी आयत है हुक्म दिया आग को ठंडा हो जाओ। अकल कहती थी कि यार ये आग में कूदेगा जल जाएगा। इस फेथ दिल ये कहता था कि भरोसा रखो, काम करो। तो entrepreneurship about that. If you do your business models, do 20 iterations, every model, I can tweak every model that will look great in every scenario. But your heart has to say, this is what I'm going to do, I'm prepared to take these risks. And your passion has to say, मुझे ये काम करना है. Financial models can be tweaked any way you want. हाँ, so based on this conversation, जो मुझे अब तक समझ में आया है कि leave the financial models aside. If you really want to become an entrepreneur, go find a customer and go find a problem that a large enough customer. Exactly. Yeah. Find a segment. Yeah. Within that segment, find the pain point. Find a solution that eliminates that pain point, and the segment is going to be big enough. Raise enough money from friends and family and angel to do your MVP 12 महीने का, ताकि तुम्हारी यूनिट इकोनॉमिक्स और कस्टमर सेट नजर आ जाए. Then you have a chance of raising money. और ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि मैं सुबह बैंक जाऊंगा शाम को आके ये काम करूंगा. हाँ. 100% इन, और यू नेवर, बहुत कम सक्सेस होती है जब ये पार्ट टाइम करते हैं कि मैं ट्रांजिशन करूंगा, अभी 6 महीने ये टिंकर करूंगा, ये चल जाएगा तो बैंक छोड़ दूँ. ऐसे नहीं होता. Yeah, I mean full time में आपका चांस ऑफ सक्सेस इतना कम होता है, पार्ट टाइम में तो 90% ग्लोबली स्टार्टअप्स फेल ना. Yeah. There's a reason for that. It's not easy. So in terms of startups versus SMEs, SMEs are not businesses that are, for me, my definition is that startup is a business that is either creating a new category or changing consumer behavior, right? तो जो SMEs हैं, for example, opening a restaurant, that's a very different thing. भाई वो भी स्टार्टअप है. देखो हमारा जो लेंस स्टार्टअप करना है बड़ा एलिटिस्ट है. वेंचर मॉडल है. एक ठेला भी बंदा लगाता है नया, वो भी स्टार्टअप है. एक पंचर की दुकान करते हैं, वो भी स्टार्टअप है. घर में होम किचन करती है, वो भी स्टार्टअप है. हमारी डेफिनेशन स्टार्टअप की ये है कि टेक रिलेटेड हो, वेंचर कैपिटल हो, स्केल करेगा. दैट्स आवर डेफिनेशन. बट देयर आर 1000 स्टार्टअप्स हैपनिंग ओवर हियर, ओके, व्हिच आर नॉट टेक रिलेटेड. पर उसमें रिस्क भी तो कम है, राइट? बिकॉज अब मुझे ये तो पता है लोग खाना खाएंगे. अब नाउ इट्स एन एग्जीक्यूशन थिंग. बट लाइक व्हाट यू वर डूइंग विद से तामीर बैंक बैक इन द डे, व्हाट यू डूइंग विद से सिम पैसा, राइट? उस वक्त तो ये चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. एंड लाइक यू नो दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये एक प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ किस तरह से. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट. हाई रिस्क. हाँ, इट्स अ हाई रिटर्न. या, ओके. Restaurants are tough business. Most restaurants fail. They close down. Yeah. It's not, you know, the example कि short है. पैसे बनाने तो सिर्फ कमर्शियल बैंक लाइसेंस लो, वादिन पकड़ो और हुकूमत पाकिस्तान को दो. शॉर्ट मॉडल. That's the only like foolproof way of success. ठीक है. One thing you mentioned was de-learning. What are some of the things that you think अगर कोई एक नौकरी, like if someone has been in a job for too long, what are some of the things that they need to de-learn? देखो हमारे पास जो मेरी 27 साल की जो सिटी बैंक में था, that helped me a lot, but I had to de-learn. का मतलब है कि आप भूल तो सकते नहीं है, बट यू डोंट यूज दोस डिसिप्लिन. जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एक ब्यूरोक्रेसी आ जाती है. एक मेमो जो है 5 क्रॉस फंक्शनल के पास जाके वहाँ पर प्रूव होता है. डिसीजन मेकिंग इज स्लो, इट टेक्स टाइम. स्टार्टअप्स यू नीड इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग. यू बक स्टॉप्स विद यू, ओके, यू मेक दैट डिसीजन, यू लिव विद इट एंड यू पे फॉर इट. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वी डोंट डू वेल, बोनस नहीं आएगा ना. छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी बंद हो जाएगी अपने ऑर्गेनाइजेशन. Stakes are much higher. Stakes are much higher, so you learn very quickly when your money is on the table. So you have to make faster decisions. You have to be less bureaucratic. You have to have less politics in a small organization. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉलिटिक्स होती हैं. Yeah. Okay. ब्यूरोक्रेसी, यू नो, कस्टमर एक्विजिशन की जो पोल प्रोसेस होती है, और वो जो आपके पास मल्टीटास्किंग की नीड होती है, जहाँ आपके पास हर चीज़ सब. When I worked in Citibank, whichever country I went to, the infrastructure was ready. There was a person to take me to the house that I need to go to the school my kid needed to go to. You know, my secretary was there, the business plan was there. I had to just execute. It's a very structured environment. This is a totally unstructured environment where you have to create everything from scratch, and you have to create your own pathways, and you don't have to follow all the old processes that you have, but some of them are very valuable. जो मेरी वहाँ स्किल आई थी वो आई थी द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउ टू क्लोज डील्स, द कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग एबल टू वर्क विद पीपल.
Okay, and it's not necessarily people, working with your bosses, working with your peers, and more importantly, working with the people, who are working with you. मैं आज भी अगर फ़ोन करूँ किसी सिटी बैंक वाले को 1996 से, वो मेरा कॉल उठाएगा. एंड नाउ दीज पीपल आर CEOs. एंड व्हाई एम आई सो सक्सेसफुल इज व्हाट इज रीजन इज माई नेटवर्क. बिकॉज कुर्सी की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो कुर्सी के साथ चली जाती है. हाँ. बंदे की जो रिस्पेक्ट होती है वो बंदे की हयाती तक जिंदा रहती है. एंड रिस्पेक्ट कम्स बाय गिविंग रिस्पेक्ट. सही बात है. ठीक है ना. मैं अभी तुम्हें कभी भी रात को फ़ोन करूँ तो मेरा फ़ोन उठा लोगे क्योंकि यू डोंट वर्क फॉर मी. हैविंग पीपल पिक अप द फोन वर्क फॉर यू, एनी फूल कैन डू. Having people you have no direct influence over but give to you because you've created respect for them is the opportunity where you create your network and you get things done. And do you regularly invest in these relationships? Like in the sense ke, how do you, like, what do you mean by giving respect generally? देखो, मैं for example LinkedIn पे मुझे कोई अप्रोच करे मैं उसको मना नहीं करता. हाँ, that's something that everyone said about you. Yeah. मेरी एक कंपनी जो वो एक देसी आया था जो यूके में सेटल हो गया था, वो पोटेंशियल लॉर्ड बन गया, वो यहाँ इन्वेस्ट करने वाला था. उस वक्त प्लैनेटाइन बहुत छोटा था, 12 कंपनीज थी. तो वो 12 कंपनीज हमने पोर्टफोलियो को बुला लिया. ही वॉज गोइंग टू इन्वेस्ट इन प्लैनेटाइन. तो वो ऑब्वियसली सोचता है पाकिस्तानी नेपोटिज्म. उनसे पूछता है हाउ डू यू नो नदीम. ओके. तो साथ ने कहा जी लिंक्डइन. वी अप्रोच्ड हिम कोल्ड कॉल ऑन लिंक्डइन. रिस्पेक्ट की मतलब लोगों को टाइम दो ना यार. डजंट मैटर प्यून है या ड्राइवर है या जिस थिंग है, उसको इज्जत से पेश आओ. ये कहना बड़ा आसान है, हम लोग करते नहीं है. हाँ. ओके. एंड गिव हिम द टाइम एंड ही विल गिव यू द टाइम. हेल्प पीपल एंड फॉरगेट अबाउट इट. इतने लोगों की मैंने मदद की है दैट आई डोंट इवन नो, वो मुझे बताते हैं कि सर आपने तो हमें इस तरह मदद की थी. एंड दे बिकम योर एम्बेसडर्स. अगर नहीं भी बने एम्बेसडर, आई हैव 8 स्टेंट्स इन माई हार्ट. आई एम लिविंग ऑन दुआज ऑफ पीपल हु हैव असिस्टेड. आई बिलीव दैट. 8 स्टेंट किधर होते हैं यार. ओके. तो वो लोगों की दुआएं ना, क्योंकि मैंने उनकी मदद की है, हेल्प किया इन सम वे और दी अदर, वो याद रखते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह का करम है. तो नेटवर्क बनता है व्हेन यू, इट्स नॉट अ 2-way स्ट्रीट. यू जस्ट अस्यूम, सीधे आजकल कर दो. वो क्या पता कब हो जाए. कभी कभी नहीं भी होता. पीपल आर अनग्रेटफुल. ओके, ठीक है, जस्ट मूव ऑन यार. लाइफ इज शॉर्ट. मैंने बड़े बड़े इन्फ्रैक्शन फॉरगिव किए हैं. लाइफ इज शॉर्ट. लोगों से गलती होती है ना, गलती होगी, माफ करो, आगे बढ़ो यार. लाइफ इज शॉर्ट. नहीं, I've learned one thing from you is के the value of time. You really are like, value your time a lot. Another thing that I've been observing you do mostly on social media is के doing these other things that you're doing, like you're cooking more. You even at one point during COVID, I remember you were cleaning the street right in front of your house. Why were you doing all this? तो कुकिंग तो मैंने शुरू की बिकॉज आई वांटेड अ हॉबी एंड नाउ आई बिकम अ self-said great cook. Okay. I cook for up to 70 people. I cook fusion food. My wife is my biggest critic of myself and my food. And when she passes my food and when she's calling 20 ambassadors and I'm cooking, that means I made it. Okay. So that's become a hobby and I liked. रोड में साफ इसलिए कर रहा था कि एक तो रोड गंदी थी, दूसरा आई वांटेड टू हम्बल माई सेल्फ मोर, तीसरा जितने भी स्टार्टअप्स आते थे मैं कहता कि मैं साथ रोड साफ करूँ. ओके. तो उसमें मुझे नजर आता था कि ये बंदा क्या करने को तैयार है, क्या बड़े CEO थे आके रोड साफ किए. ओके. मछली बैंक के CEO मेरे साथ रोड साफ करता था. ओके. सो इट्स अ टेस्ट. इसी तरह जब मैं हाइकिंग कर रहा था मैं स्टार्टअप्स को बुला लिया करता था. मैंने कहा आ जाओ 5:30 बजे 6 बजे आ जाओ, हम जाएंगे 2 घंटे ऊपर. गोल्फ खेलता हूँ तो बुला लेता हूँ. गोल्फ इज द ग्रेट जज ऑफ कैरेक्टर. बॉल को ठुड्डा कौन मार रहा है, मतलब कि जंगल में बॉल आती है मिरेकलसली बाहर आ जाती है, तो इट्स अ ग्रेट जज. गोल्फ में जो चीटिंग करता है जिंदगी में चीटिंग करता है. अच्छा. ओके. सो आई एम ट्राइंग टू नॉट इनफ, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माई लाइफ. दिस व्हाई आई वांट टू राइट माई सेकंड बुक. आई रियली एंजॉयड राइटिंग माई फर्स्ट बुक. I don't want to be defined only by my business. Okay? I want to be defined for more than that. देखो आदमी के 4 पहलू होते हैं. You have a physical aspect of yourself, you have an emotional aspect of yourself, you have a spiritual aspect of yourself, and then you have an intellectual aspect. ये 4 अलग चीज़ें हैं. हमारे यहाँ बॉडी जान वान सब बनाते हैं, किताबें वैसे कोई नहीं पढ़ता. Okay? क्या नाम है, इमोशनली होते हैं इवॉल्व, स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होता. ठीक है, मैं अभी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ. आई एम नॉट से आई एम देयर येट बिकॉज अभी मेरी नमाजें जो है मोर फिजिकल एक्ट है एज अपोज टू अ स्पिरिचुअल एक्ट. इट्स माई लीस्ट developed piece which I need to, as you get to your age you want to be developed more. So these 4 aspects. So my advice to people is in चारों को देखो and try and balance. Emotional is a relationship
with your spouse, with your parents, with your siblings and other people as well. You know, how emotionally. Old age की एक बात है, you know, people who die, you want longevity की success क्या है? Having friends. Okay, that you hang out with. You're playing pool, you're doing gupshup, you're doing whatever. And friends are not people who you've created companies for, but friend in your own peer group that you talk to. और मेरे लिए मुश्किल होता है because they talk about stuff which I don't. Their sons are my biggest fans. And उनके बच्चों से ज़्यादा मेरी दोस्तियाँ हैं, बल्कि उनसे. You can relate more. Yeah, they relate more to me. Anyway, but as I said, you know, life is short. Figure out, you know, what you want to do in this lifespan. I'm being more philosophical now. I'm 68, maybe I have 10, I could die tomorrow, but I have 10, 15 years good before, you know, it becomes difficult to move around and everything else. I want to be able to do what I want. So I want to be able to write another book. I want to perfect my Mandarin. I want to open 10 more companies and, you know, have scale in them. I want to be able to make more entrepreneurs more successful than I have. So, and I want to be able to do a cordon bleu chef course. My daughter did it. Amazing. You know, her presentation skills are 1,000 times better than mine. Her cooking skills as well. I want to be able to find that time. I'm a single, you know, handicap golfer, but I want to become even better. Mera masla is what I do, I want to do with a passion. Yeah. And excel at it. And sometimes I don't. And I need to be able to accept that. So, how do you view personal growth? No, wait, in चार aspects. In चारों aspects. So, how do you invest in yourself? तो invest in yourself जो है ना, हमारे पास अब dopamine culture आ गया है. हाँ. Instead of reading a book, I'll look at TikTok. या वो 60 seconds. या मैं वो देखूंगा 30 सेकंड में मेरा gratification आ जाएगा. मतलब कि इंस्टेड तो बुक किताब पढ़ना छोड़ दी है. स्पिरिचुअल हम बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए. मतलब कि काम करने में रमज़ान आता है तो शराब पीना छोड़ देते हैं, नमाज़ें करते हैं, नाम चला गया, बाकी अपने नॉर्मल पे आ जाते हैं. या तो ये जो भी है ना, अब मेरी जो नमाज है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मेरे को हर तरह की नमाज कबूल है. मेरे दिल में मुझे पता है कि मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा. अभी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन जो सच्चे दिल से कम्युनिकेशन है मैं अभी तक नहीं पहुँचा. यू हैव टू गेट देयर. मेडिटेट करो, अपने आप को क्लियर टाइम दो. बिगेस्ट करेंसी यू हैव जो डिप्रिशिएटिंग है वो टाइम है. कभी जेब में हाथ डालोगे 500 रुपये मिल जाएंगे, 5 मिनट नहीं मिलेंगे. ओके, जो टाइम निकल गया वो निकल गया. तो यूज योर टाइम. 24 घंटे में यूज योर टाइम इफेक्टिवली. बिल्ड योर रिलेशनशिप्स विद पीपल हु आर क्लोज टू यू. ओके, डू योर फिजिकल थिंग फॉर लॉन्जेविटी दैट यू हैव. स्पिरिचुअल अपने आप को ठीक करो. इंटेलेक्चुअल डोपामाइन कल्चर छोड़ो. और मैं अपने आप को कह रहा हूँ, माय वाइफ टोल्ड मी तुमने किताबें पढ़नी छोड़ दिया. आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स एवरी वीक. या यू नो, वही मैंने नहीं करी. तो आई नीड टू गेट बैक. दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ माय सेकंड बुक. I just have to manage. My day starts very early. My day starts at 4 a.m. in the morning. Oh wow. Okay. So मुझे वो जो पहले 4 घंटे दिन के आराम से मिल जाते हैं, जिसमें मेरे 2.5 घंटे तो गोल्फ में निकल जाते हैं. अच्छा. But बाकी मेरे पास टाइम होता है काम करने के लिए. So my meetings are never more than 20 minutes. ये तो मतलब लंबा टाइम है because you asked me for 3 months to do this. आज मेरा क्लियर था, तो जितना लंबा टाइम ले लो. लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग का कुछ ज़रूरत ही नहीं है. मीटिंग के लिए तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए और आउटकम होना चाहिए. If I have a meeting, my एजेंडा क्या है, तुम्हारा आस्क क्या है. Yeah. If I know your ask, I can tell you what it is. You know, I can say yes or no. मतलब मीटिंग का आउटकम ही कोई नहीं हुआ, फिर दोबारा मीटिंग doesn't make any sense. Okay, no, that's a pretty impressive framework to think about life generally. Last question: if I am a 20-year-old, मैं 20 साल की उम्र है, या maybe even earlier मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, और मुझे फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं कौन सी स्किल सेट्स को आज से डेवलप करना शुरू कर सकता हूँ कि मैं अपनी इन स्किल सेट्स में मैं इन्वेस्ट करूँ और व्हाट स्किल सेट्स हैव हेल्प्ड यू थ्रू आउट योर लाइफ? आई एम थिंकिंग यार, I think I have the ability to deconstruct a problem. ठीक है. And then see what needs to be done to solve it. Okay, so you must have the ability of deconstructing problems and solve it. I think I have the ability to take an ordinary person and motivate it to deliver extraordinary results. Okay, I think. Okay. Yeah. So people's skill set in learning how to work with people and how getting extraordinary things out of them, and it doesn't come with big bonuses. It comes with respect, motivation, and interaction. Okay. This third skill thing I think I have is the ability to execute. बहुत सारे लोग हैं जो आइडियाज होते हैं, बट आइडियाज आर अ डायम अ डजन. या इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट, एंड आई थिंक आई हैव द स्किल सेट टू एग्जीक्यूट बाय गेटिंग द राइट टीम, बाय प्रायोरिटाइजिंग व्हाट नीड टू बी डन एंड एग्जीक्यूटिंग. सो दो स्किल सेट्स हैव हेल्प मी. अच्छा, मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा था.
Yeah. मैं तो अभी हैप्पीली कॉर्पोरेट लाइफ में चल रहा था, बट ट्रांजिशन करने के बाद दोज आर द स्किल सेट्स आई थिंक हैव बीन मोस्ट यूजफुल. जो दूसरे स्किल्स कहते हैं तो ह्यूमन नेचर के ना, रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी एंड बीइंग एबल टू हेल्प पीपल विदाउट थिंकिंग मुझे वापस में क्या मिलेगा, जस्ट डूइंग इट, एंड दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. एंड द नेटवर्क इफेक्ट इज द force multiplier. Why are my companies more successful? Other than the people, I've definitely got the right founder, the idea is good, is my ability to help them scale and my ability to get them out of trouble when they get into trouble. And that's through the network effect. Network effect में ये है कि जब आप किसी से गलत काम के लिए नहीं कहेंगे ना, they'll always give you time. अब रेगुलेटर्स है, मैंने आज तक ज़िंदगी में उनसे कभी किसी का ना फ़ोन कराने की ज़रूरत पड़ी है, ना कभी मैंने उनसे कोई गलत काम के लिए कहा है. And they have so much respect for what I put on the table, and I've helped them develop this thing that I can get what I can get FaceTime and put an idea forward. अब वो हो नहीं हो, that will be on its merits. Yeah. But I can get the FaceTime, I can put an idea forward, and that's huge. No, that goes a very long way. What odd jobs have you done in life before, say, going into? So okay, that's very interesting. मेरे टाइम में जब आप A levels करते थे ना, and you wanted to go to US schools, there was like a 6-7 month delay between the time A levels finished and because US schools open after summer in September, October, A level January, February खत्म होते. So I started teaching economics A level. अच्छा, right after completing economics A levels finished, I taught A level economics, and then मेरे पास लोग आने हो गए ट्यूशन देने के लिए. So मैंने ट्यूशन शुरू कर दी. फिर मैं स्कूल से पढ़ा के आता था और 1 बजे 2 से 3 से 4 में ट्यूशन करता था, और फिर एक 7 से 8 3 क्लासेस करता था. फिर मैंने कॉमर्स की, तो उस वक्त मेरी पॉकेट मनी मेरे ख्याल दिस इज मे बिफोर यू वर बोर्न, दिस इज 1973. Yeah, I was not born. तो 75 में मैंने अपना A लेवल किया, तो मेरी पॉकेट मनी 100 रुपये होगी. सडनली मैं 3,000 रुपये बनाने शुरू हो गया. That's huge money. यार अमेरिका जाने की जरूरत क्या है, ट्यूशन करो, जिंदगी ऐसी है. भाई आप 18 साल के ऊपर 3,000 रुपये 1978 मनी, probably worth 3,30,000, I don't know what it's worth right now. So that was my first job. So and a lot of my students went to Cambridge. Oh wow. And did very well. They're lawyers. वो अभी बात करते हैं, मैंने ट्यूशन की थी. अच्छा, फिर जब मैं अमेरिका पहुंचा तो आई वॉज ऑन फाइनेंशियल एड, तो वीकेंड्स पे मैं जाके मेसीज में सूट्स बेचता था. ओके, तो आई वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन सेलिंग सूट्स थे. Okay. तो क्योंकि मैं पार्ट टाइम था, जो परमानेंट थे वो कमीशन पे थे, तो उनसे मेरी डील होगी. आई नो हाउ टू डू डील्स. मैंने कहा बेटा सूट तेरे नाम पे डाल दूंगा, तेरी कमीशन में मुझे कुछ हिस्सा दो. ठीक है. तो आई वाज द मोस्ट, सो आई डिड. Why were you the most successful? Like what hacks, sales I think hacks I did have you some found? charm. Okay, and I have the ability to convince people. I think. To sell, really? To Yeah. sell. Yeah, I think I can sell. Okay. So उस ज़माने में I'm talking about right in the word of college. And then I was working in the library. वो तो आसान काम था. I was also working in the cafeteria, cleaning dishes. वो भी आसान काम था. The selling suits was the more difficult part. Do you think that helped you shape more? Because मैं आज मेरे पास my cousin son कोई इस तरह के आते हैं, बच्चे कहते हैं किसी बैंक में मुझे इंटर्नशिप दिला दें, and I'm like, तुम बैंक में एक इंटर्नशिप करके क्या करोगे यार? कॉफी बनाएंगे. Exactly. I keep telling them to go to an internship in a startup. हाँ. जहाँ मल्टीपल चीज़ें करें. वो बोले यार मार्केट में जाओ, इस पूरी मार्केट में देखो कि कितनी QR कोड लगी हुई हैं. हाँ. Get them out in the market. ये जो बबल है ना, हम तो हमारा बबल बढ़ता जा रहा है. मैंने तो बस में ट्रैवल किया है. मैंने पैदल किया. आई यूज्ड टू वर्क इन ग्रामर स्कूल इन सेंट पैट्रिक्स. आई यूज्ड टू लिव इन आयशा भवानी. मैं तो पैदल भी जाया करता था. ओके, मेरे बच्चे नेवर सीन द इनसाइड ऑफ अ बस. ओके, ऑलवेज इन अ कार, एयर कंडीशन कार. मैं तो पाकिस्तान से पहली बार जब बाहर गया तो मैं कॉलेज पढ़ने गया था. माई फादर वॉज इन द नेवी, माई मदर वॉज हेडमिस्ट्रेस स्कूल टीचर, कुडंट अफोर्ड इंटरनेशनल वेकेशन. यहाँ बच्चे तो हर साल इंटरनेशनल वेकेशन में जाते हैं. मैं 4 साल 3 मैंने कॉलेज अपना 2.5 साल में ख़त्म किया था, इंस्टेड ऑफ 4 years. एक बार मैं वापस आया था, वो भी वहाँ से कर्जा लेके जो मैंने उतारा था. यहाँ तो हर वेकेशन में. तो लाइफ इज मच ईजियर फॉर आवर चिल्ड्रन, ओके, बिकॉज वी प्रोटेक्ट देम लॉट मोर, वी बिकम मोर एफ्लुएंट, सो वी प्रोटेक्ट देम मच मोर. सो जितना एक्सपोजर मिल सकता है बबल से बाहर, उतना ज़्यादा दे लर्न द रियम. बट आवर किड्स आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, दे स्मार्ट, दे नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. So you need to be street smart to do a lot of things. And the only way to do that is when you interact with people. मैं आपको बता दूं ना, जब मैंने सिटी बैंक 27 साल का छोड़ा, जब मैंने तामीर बैंक शुरू किया, तो मैं तो टाई और सूट पहनता था माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में. मेरी दुनिया कराची थी. सिंध क्लब, पीसी, एयरपोर्ट,
एंड डिफेंस। या जब मैंने तामीर बैंक शुरू किया तो मुझे चला औरंगी, बिहारी, कुरंगी, लांडी, अख्तर कॉलोनी, सुरजानी टाउन क्या चीज़ होती है। मैं तुम्हें दिन में छोड़ के आ जाऊँ सुरजानी टाउन, तुम वापस नहीं आ सकते, या औरंगी छोड़ के आ जाऊँगा। ओके, तो मुझे पाकिस्तान का पता चला। फिर मैंने 300 ब्रांचेस खोली, हर ब्रांच खुद खोली, फ्रॉम कराची फिश हार्बर ऑल द वे टू एबटाबाद, एवरी ब्रांच आई ओपन माई सेल्फ। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड द रियल पाकिस्तान। बता रहा हूँ, सिटी बैंक के बबल में रहते हैं ना यार, हमारी दुनिया ही और थी। फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते थे, अब वैसे फाइनेंस करते हैं। ओके, तो वो ज़िंदगी जब बदलती है, जब आप मैं और आप जो है 0.0001% है पाकिस्तान के, और हमारे पेयर्स भी वैसे ही हैं, तो हम वही दुनिया देखते हैं। असल दुनिया तो उससे बाहर है। तो जब आप इससे तजर्बे करते हैं, देन यू स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड देन यू लर्न लॉट मोर। So yeah, so anyone who's in A levels or वो college काम करो, मैकडॉनल्ड में काम करो। माई ब्रदर जॉइंड मैकडॉनल्ड्स एंड ही वाज अ GM इन सऊदी अरेबिया फॉर जनरल मोटर्स। तो वो जब कनाडा में गया, ही माइग्रेटेड। उन्होंने कहा देखें जी, मैकडॉनल्ड में गया, उन्होंने कहा जी हमारी तो लिटर फ्री जोन होती है 500 यार्ड्स इस साइड, 500 यार्ड्स सर, ये झाड़ू लें बाहर जाके ना, ये सब कचरा उठा के लेके आए। लेके आ गया, वापस आया, उन्होंने कहा देखें ये बल्ब ये काम नहीं कर रहा था, इसको चेंज करें और थोड़ा मॉप करें। दे वर सीइंग दैट कुड ही मेक दैट चेंज फ्रॉम बीइंग अ जनरल मैनेजर टू बीइंग अ मैकडॉनल्ड एम्प्लॉई। तो यू फोर्स पीपल टू दैट। मैं लोगों से झाड़ू क्यों करवाता था? मैं तो खुद करता ही था, बिकॉज आई डिडंट लाइक, आई वांटेड टू बी क्लीन। बहुत कचरा होता, मैं सिर्फ अपने घर के सामने साफ नहीं करता, आई यूज्ड टू क्लीन दैट होल स्ट्रीट okay फ्रॉम टॉप डाउन। लोगों को बुलाता, देखता हूं इनका रिएक्शन क्या होता है, झाड़ू पकड़ के मास्क पहन के साफ करना। यू हैव टू गेट टू, आई मीन वो एनेक्डोटल नहीं था, एक्चुअली पसीने निकलते थे साफ करने के अंदर। तो जितनी ग्राउंड स्मार्टनेस आएगी ना, जब ये होगा तो पता चलेगा कि ज़िंदगी ये बबल में रह के काम नहीं होता। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप इजी पैसा वो तामीर के जब आप जाके वो खुद ब्रांच खोलते थे, लाइक डू यू थिंक दिस वैल्यू के एक एंटरप्रेन्योर जो मेन फाउंडर है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ द प्रोसेस विद इन देयर बिजनेस? देखो, इंसान को चौगत कब बनाता है इंसान? जब उसके पास ज़मीनी हक़ाइक़ से बिकॉज फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आती है। हाँ, हर लेवल पे फिल्टर होके आपको आती है, एवरीथिंग इज़ गुड, लाइफ इज़ ग्रेट, मसला ही कोई नहीं है। जब बम फटता है तो पता चलता मसला क्या हुआ। या तो जब आप, when I used to open the branch, I used to have a session with the BMs, I used to ask for a customer session as well, I used to have a session with the team. तो एक तो उनको मेरी पास एक्सेस आ गई थी, दूसरा मुझे कुछ सेंस आता था। दो जगह मेरी किताब के अंदर, मैं एक ब्रांच में गया, मैंने वो BM को देखा, मैंने अपने 2 काउंटर को, अभी मुझे सुनाते हैं, आपने कहा सर, आपने कहा ये चूना लगाएगा हमें, it was too smooth। वो 6 महीने बाद देखा वो फ्रॉड कर रहा था। विद दैट वन इन मेनी, आई गेट इट रॉन्ग सम टाइम, बट इस पर एक तजर्बा हो जाता है कि इंसान को देख के वो जो ज़्यादा स्मूथ होता है, ज़्यादा प्लीज होता है, जिसकी डेप्थ नज़र नहीं आती, ये एक तो आर्ट है, साइंस नहीं है। ओके, जब मैं फाउंडर में बैठ करता हूँ, आधे घंटे में 1 घंटे में आप कितनी निकाल सकते हैं? बस कुछ एक फ़िल्टर्स आ जाते हैं, तजर्बा आ जाता है। एक बंदा कहता है जी मैंने शेर पाला है, मेरे पास एयरपोर्ट पे प्लेन पे रखने का लाइसेंस है, अच्छी बात है। But that does not translate into success. But thank you so much for your time. I really appreciate it, and I think काफी सीखने को मिला. Like this is the longest, and I'm primary beneficiary of this entire session, both online, offline. But thank you so much. Is there anything else that you would like to talk about? देखो, जिंदगी में रिग्रेट्स नहीं रखो। हाँ, okay. गलती की, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, लर्न फ्रॉम दैट लेसन। वो वाली गलती कोशिश करो दोबारा नहीं करो, नई गलतियाँ करो। गलतियाँ होंगी, सबसे गलतियाँ होती हैं, बट दिल में रंजिश नहीं रखो। लाइफ इज़ शॉर्ट, फॉरगिव पीपल, मूव ऑन, यू विल हैव अ मच हैप्पियर लॉन्गर लाइफ। ये एनिमोसिटी से काम नहीं चलता। फॉरगिव पीपल, मूव ऑन, बी विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। अब ये है कि कुछ लोग ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, कुछ कम रिस्क टेकर हैं, वो नेचर पे डिपेंड करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, मैं अब 100 बार कहता हूँ। इसके लिए एक टेम्परामेंट चाहिए होता है, और हमारे पास तो बचपन से सिखाया जाता था एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए तो वर्किंग क्लास, वो तो यार उसकी तो बिजनेस है। हम तो मतलब कि मल्टीनेशनल में सैलरीड लोग हैं, वो तो बिजनेस है यार, उसकी दुकान है। अच्छा, टाइमिंग की आपने बात की थी एक दो बीच में। टाइमिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइमिंग फॉर अ बिजनेस एंड आइडिया? एवरीथिंग। देखो, बीइंग ये मैं कह रहा हूँ ना, चलो एक बंदा एयरपोर्ट की लाइन में खड़ा होता है, उसके आगे 2 लोग खड़े होते हैं। वो कहते हैं ये बताओ यार, सक्सेसफुल या कामयाब इंसान किस तरह होता है? वो कहता है यार जहानत से होता है। और किससे होता है? कहता है अच्छा, जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो बहुत ज़हीन है, ये क्यों नहीं इतने कामयाब हैं, क्यों नहीं मल्टी मिलियनर्स हैं? मैंने कहा यार नहीं, मेहनत से होता है। वो कहता है अच्छा, जब पठान जो रोड तोड़ते हैं दोपहर में ज़्यादा मेहनत कौन करता है? तो कहते हैं जहानत, मेहनत और फिर अल्लाह मियाँ की
मतलब रहमत चाहिए होती है, इट्स टाइमिंग थिंग, यू फॉर्चुनेट। ये तो समझते हो मैंने खुद किया, ये खुद नहीं होता है, मैं इसकी वजह से बहुत जो ब्लेस्ड एक अपॉर्चुनिटी गॉड गिव्स यू इन माय व्यू, ओके। एंड टाइमिंग इज द मेन थिंग। आप समझते हो यार मेरी बड़ी टाइमिंग थी, कोइंसिडेंस नहीं है वो, इट जस्ट हैपेंड दैट यू हैव, बट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। And that's it. And you don't really get to be in the right place at the right time very often in life, right? वेरी ऑफन। तो जब होता है तो दैट्स ग्रेट, मतलब मैं को शुक्र करो, हर दिन जिंदा रहते हो शुक्र करो, यू लिविंग ऑन बोरोड टाइम, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड एंजॉय योरसेल्फ। ये मतलब कि अगले मैं 1 साल में 5 साल में वेकेशन पे जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो फिर बच्चों की परवरिश करूंगा, पूछें घर आओगे बच्चों की ये अंकल कौन है, ओके। तो ये मतलब बैलेंस योर लाइफ एंड टू द एक्सटेंट दैट यू कैन। मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है टू बैलेंस लाइफ। नौकरी करते हैं ताकि घर का खर्चा चले, हाँ, ओके। उसमें जिंदगी, वो जो नौकरी करते हैं उसमें उनको कोई शौक़ नहीं है या मज़ा नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है ये भी ज़मीनी हक़ाइक़ है। लेकिन जब ऐसी कोई नौकरी मिल जाए जहाँ इंसान जो है उसका पैशन हो, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अच्छा, आई फील लाइक ये मैंने एक सो बोथ माय पेरेंट्स आर प्रोफेशनल्स, सही है ना? सो उर्दू स्पीकिंग फैमिली, सब लोग भी प्रोफेशनल रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो कभी ऑप्शन ही नहीं था। बट माय मेमन फ्रेंड्स, उनके लिए नौकरी करना कभी ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो तो शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, हमें स्कूल से सिखाई एंटरप्रेन्योरशिप। वी शुड हैव इन्वेस्टमेंट फेयर, मतलब छोटी स्टार्ट, पीपल शुड हैव दैट ऑप्शन कि एक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वायबल ऑप्शन। हमारे अब तो यूनिवर्सिटी में जाके और एक लेवल पे जाके मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते हैं। इट्स वेरी लेट इन लाइफ। या माय एडवाइस इज यार, डू व्हाट ड्राइव्स यू, गिव्स यू पैशन। इफ यू हैव दैट लग्जरी, दैट्स अ बिग प्रिविलेज, या बिग प्रिविलेज, देन दोनों हाथ से पकड़ लो उसको, ओके। और जब इस सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी जिंदगी में इम्तिहान और भी हैं। All right, young man. Thank you so much. Thank you very much. I think I got quite a bit, which is good enough. We will piece it together as well. Chalo. Thank you so much.